Welcome to the 7th batch of the National Education Policy 2020 Professional Development Program for University and College Teachers. Today is the first day of the Swayamprabha live session of your batch. I am Dr. Gloria Kujur, Faculty of Stride and one of the team members of NEP PDP program. Today we have with us Professor Santosh Panda, Senior Faculty of Distance Education and Director of Stride, IGNOU. He is also the National Coordinator of the National NEP PDP program. Sir, we welcome you to today's lecture on the topic NEP 2020 Multidisciplinary Program, Academic Bank of Credit and Skilling. Sir, may I now request you to kindly begin your lecture? Thank you, Dr. Gloria. So friends, welcome to this first day presentation of batch 7 of National Training Program, NEP PDP Professional Development Program, NEP 2020. Thank you, Dr. Gloria, for introducing me. And friends, let us proceed to discuss today NEP 2020, some of the very important features, multidisciplinary institutions and programs, academic bank of credits and skilling. I will make it multilingual, so therefore you can understand in Hindi as well as in English. So friends, let's proceed. So as you know, the NEP 2020, uske jo sabse mukhya mudda hai, access, equity, inclusivity, quality and to increase gross enrollment ratio, wo to sabse bade mudda hai, wo to hona hi hai. Up to 50% of the GER to increase by 2035. और इस वक्त हमारा बहुत कम है, इतना कम नहीं है लेकिन 50% तक बढ़ाना है और उसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग का हिस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा और बहुत सारे विश्वविद्यालय कॉलेजेस ओपन डिस्टेंस लर्निंग ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये ओपन यूनिवर्सिटी डुअल मोड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इसको आगे बढ़ाना है। आज की तारीख का जो मुद्दा है तो वो रीजनल लैंग्वेज, भारतीय ज्ञान परंपरा, ये तो तमाम चीज़ें हैं. सो इंडियन नॉलेज सिस्टम इज प्राइम इम्पोर्टेंस एंड डिस्कोर्स और टीचिंग लर्निंग in regional language and mother tongue has been the prime importance in the NEP 2020. But the most important part today that we'll be focusing on multidisciplinary institutions and programs and how to make the new curriculum more skill based, because TVET, technical vocational education and training, liberal foundation education, liberal arts education, and accredited or you would say the apprenticeship or attachment to an institution are becoming compulsory. So this has been the major concern, and the multidisciplinary academic bank of credits, skilling and employability would be contributing towards that, and we will discuss precisely that. So multiple entry and exit would also be there. Horizontal vertical mobility between general education and vocational education and vice versa should also take place. I will discuss about that. So all the three concepts are put together today. This is a new discourse that we'll be doing today, but based on NEP 2020 and the existing situation in the country. So outcome-based learning was existing much before NEP 2020 came up by UGC.
that we will also discuss. Accreditation of prior learning or recognition of prior learning, RPL, and credit transfer. We will touch upon that. Technology-enabled learning, cross-border delivery, and the quality research. The focus is on blended learning. So therefore, as you see, the focus on NEP 2020 is that teaching learning strategies need to gear towards blending. But as on date, also 40% of the credit hours a student can take from the SOIM platform, provided your institution and statutory bodies in the institution have approved that for this program of study, for these credit hours, one can take from the SOIM. Even you can take from other MOOCs if your institution allows, or open education resources can also be used. But insofar as blending is concerned, that you see on your screen, the three kinds of delivery strategies that we need to judiciously, depending on, it's your choice, depending on your discipline, your expertise, your requirements of the students, the situation that is obtained over there. All lot of factors put together that you will decide that how three kinds of delivery strategies you will blend in the curriculum, and therefore your teaching learning strategies will be based on these. First is self-learning. In open distance learning, the most stress is given on self-learning. In a face-to-face situation tomorrow, that you will give certain credit hours to self-learning that the students will study themselves. बच्चे अपनी पढ़ के आएंगे और as teachers हम उनको mentor करेंगे. So the onus of this study will shift to the students. So student self-learning, आज की तारीख में स्वाध्याय बड़े कमज़ोर हो रहे हैं, तो इसमें स्वाध्याय self-learning skills, study skills ये भी बढ़ेंगे, और हम लोगों की भी थोड़ी workload कम होगा, obviously, because we will shift that workload to something else, some of the professional development research that we can do. So self-learning कुछ हिस्से रहेंगे, आपके ऊपर चॉइस है कितनी क्रेडिट और कितनी importance आप उसके ऊपर देंगे. Second is face-to-face teaching learning. फॉर्मल सिस्टम में फेस टू फेस ज़्यादा रहेगा, और डिस्टेंस लर्निंग में ये अभी तक तो है, आगे भी कैसे तय होगा कि जो स्किल बेस्ड हैंड्स ऑन होंगे वो फेस टू फेस होंगे. अभी तक रेगुलेटर्स के ही मानना है, बट होल लॉट ऑफ वर्चुअल इंटर्नशिप इज ऑल्सो अवेलेबल, वर्चुअल हैंड्स ऑन इज ऑल्सो पॉसिबल, बट फेस टू फेस स्किल डेवलपमेंट भी होगा. सो फेस टू फेस सेल्फ लर्निंग. और तीसरा ऑनलाइन, जो हमारे पास सोशल टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट के अलावा all are free of cost, and therefore including the software, the platform, and the network, all the three, social technologies and social networks. ये दोनों चीज़ें हमारे पास साधन हैं, और जो इंटरनेट की ज़रूरत है जब हम ऑनलाइन जाएंगे तो, लेकिन ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी आर इनटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन शेयरिंग एंड ओपन प्लेटफॉर्म एंड ओपन नेटवर्क्स. सो देयरफॉर combination of the three, that self learning, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, ज़्यादातर डिस्कशन, डिबेट्स, हैंड्स ऑन, ये चीज़ें हो, प्रैक्टिकम हो, और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव असाइनमेंट्स बाय स्टूडेंट्स. ये तीन तरह का क्रेडिट आप उनमें बांटेंगे आपकी करिकुलम में, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस गेट इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स. एनईपी का मुख्य मुद्दा है कि आज की तारीख में जो institutions हैं वो largely, there are many institutions which are confined to one discipline of study or one professional area of study, or within the university also जहाँ multi departments हैं, departments are confined to themselves. Departments अपनी आप में सीमित हैं. This is what is called a disciplinary blindness. Even within a faculty, the disciplines like social science, sociology, psychology, economics, they are also not talking to each other in a multidisciplinary fashion. Maybe as good teachers, we have been doing interdisciplinary teaching and learning. Interdisciplinary तो हो रहा है, लेकिन multidisciplinary की बात करेंगे. So संस्था को multidisciplinary होना जरूरी है, प्रोग्राम को multidisciplinary होना जरूरी है. तो therefore एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी उसमें शामिल हो पाएगा. ये एनईपी का मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे. So friends, therefore NEP 2020 कह रहा है कि moving to large multidisciplinary universities and higher education institution clusters is thus the highest recommendation of this policy regarding the structure of higher education. THEIS थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा. So NEP 2020 का कहना है
कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बने और उनकी प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी बने, और जो हायर एजुकेशन क्लस्टर के तहत होगा, थोड़ी बहुत उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्लस्टरिंग कैसे होगा, कॉलेजेस भी क्लस्टरिंग में ज्वाइन करेंगे, ये उसकी एक मेन रिकमेंडेशन है। और 3 तरह का संस्था रहेंगे हायर एजुकेशन संस्था, जो लार्जली research universities, so there will be multidisciplinary research universities, but they can also undertake in a mini or minuscule manner some kind of teaching. There will be multidisciplinary teaching universities which will also conduct research, but research will be largely concentrating on student research, student projects, students' dissertations, and so on and so forth, but teachers can also do their own research on the discipline and discipline teaching, pedagogy of the discipline. So researching in one's own discipline and researching on the pedagogy of the discipline, कि आप अपने डिसिप्लिन में पढ़ाएंगे कैसे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, असेसमेंट कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ों के ऊपर रिसर्च ये भी ज़रूरी है। सो 2 तरह के रिसर्च भी कर सकते हैं। एंड थर्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, कल को ये सब एफिलेट ऑटोनोमस कॉलेज बन जाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएंगे, कोई एक मैनेजमेंट के अंडर कई कॉलेजेस हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, एंड दूसरे मैनेजमेंट के कॉलेजेस दे कैन डिसाइड वेदर टू मर्ज विथ अनदर मैनेजमेंट और दे कैन बिकम ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी, और दे वुड लाइक टू बिकम ऑटोनोमस कॉलेजेस। सो 3 तरह के रहेंगे, पर तीनों को मल्टी डिसिप्लिनरी होना जरूरी है। एफिलेटेड कॉलेजेस दे कैन बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेजेस, और दे कैन बिकम क्लस्टर कॉलेजेस। एक शहर में 5 कॉलेजेस हैं एंड 5 कॉलेज 5 मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं, बट 5 आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी करिकुलम शेयर कर सकते हैं। एक स्टूडेंट दूसरी कॉलेज से जितने भी अलाउड होगा कोर्सेज ले सकता है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल बेस्ड कोर्सेज दूसरी संस्था से रह सकते हैं, उसमें MOU होना जरूरी है। और कोई मॉर्निंग में पढ़ा रहा है तो दूसरा मॉर्निंग में वो पॉसिबल नहीं है, दूसरा इवनिंग में पढ़ा सकता है। कॉमन डिपार्टमेंट्स मल्टी डिसिप्लिनरी बनने के लिए तो लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसॉफी, इंडोलॉजी, आर्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्योर एंड अप्लाई साइंसेस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसलेशन, इसकी ज़्यादा जिक्र है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। ये डिपार्टमेंट्स एक कॉमन मल्टी डिसिप्लिनरिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर इंस्टेंस एजुकेशन विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पेडागॉजी ऑफ अदर डिसिप्लिन्स, ऐसे चर्चा हुई है। हाल ही में UGC का डॉक्यूमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को देखिएगा तो उसमें ये चर्चा मैं उसी में कर रहा हूँ। इत्तेफाक से मैं वो कमेटी का मेंबर था, तो ये चर्चा उसी के ऊपर आधारित है। तो उसमें एक पोर्शन और है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स विल कंट्रीब्यूट टू पेडागॉजी ऑफ अदर डिसिप्लिन्स, but also education department as a multidisciplinary interdisciplinary study that will also borrow from other cognate disciplines to also become multidisciplinary. UGC guidelines जो मैं जिक्र कर रहा था, तो transforming higher education institutions into multi-department or multi-disciplinary institutions 2022 की गाइडलाइन कह रहा है स्कॉलर्स, पीयर्स, स्टूडेंट्स दे हैव टू बिकम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी बने। इत्तेफाक से इस वक्त आइदर सिंगल डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस है या मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत रिजिड डिसिप्लिनरी बाउंड्री उसमें है, आपस में चर्चा नहीं होता है, करिकुलम में शामिल नहीं करते हैं। चर्चा तो होता रहता है कैंपस में, बट करिकुलम में शामिल नहीं होता। बट करिकुलम में क्रेडिट आवर्स के साथ उसमें कोर्स आदान प्रदान करते हुए इसकी जिक्र हुई है। सो मल्टी, जो रेड कलर आप देख रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस मल्टी डिपार्टमेंट्स बनेंगे या मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम्स बनेंगे, एंड देयरफॉर स्टैंड अलोन या डोमेन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस रिमूव हो जाएंगे। NEP 2020 जिक्र किया है 12-13 हज़ार स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक ही डिसिप्लिन बेस्ड है। उसमें टीचर एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, लगभग 10,000। जिगर ये है आइदर दे कन्वर्ट इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस विथ मल्टी एजुकेशन प्रोग्राम्स or become part of or extend to a college with multi departments of social science, liberal arts, humanities, science and commerce and management and so on and so forth, or they extend the education department into multi
multi departments within the school of education. School of education की जिगर है जिसमें different departments of education, education planning and management, economics of education, guidance and counseling, education technology, education leadership, teacher education, education as a discipline of study and so on and so forth उसमें रहेंगे. इसकी जिगर हुआ है. NEP 2020 का अप्रोच क्या कह रहा है इसके बारे में कि एकेडमिक कोलैबोरेशन थ्रू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्लस्टर्स. इसका मतलब ये हुआ शहर के बीच में, शहर के अंदर और आपस में ज़्यादा ना दूरी होते हुए जितनी हायर एजुकेशन संस्था हैं इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़ वो एक क्लस्टर बन जाएंगे. आपस में MOU करके एक दूसरे का कोर्सेज ऑफ स्टडी ले सकते हैं अगर इंस्टीट्यूशनल कोर्सेज ऑफ स्टडी देने के लिए तैयार है. मतलब क्या हुआ कि आप दूसरी संस्था से आपके स्टूडेंट अगर कोर्सेज लेंगे उसकी फ़ी वो दूसरी संस्था में भरेंगे. सो कुछ पोर्शन ऑफ क्रेडिट्स अभी चर्चा करेंगे, कुछ पोर्शन ऑफ क्रेडिट्स वो दूसरे से ले सकते हैं, स्पेशली स्किल बेस्ड कोर्सेज वो दूसरे से ले सकते हैं. दूसरा, मर्जर ऑफ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस विथ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, या वो मर्ज हो जाएं, एक मैनेजमेंट की हैं आपस में मर्ज हो जाएंगे, या यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएं. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेजेस आर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, दे आर नॉट एफिलिएटेड कॉलेजेस. सो एफिलिएटिंग सिस्टम will be abolished gradually, will be abolished, and they can also add departments. For instance, जिगर हुआ है departments like education to make it multidisciplinary. Cluster colleges कैसे रहेंगे? Members of the cluster, campus colleges can join together. Nearby colleges can also join together through a memorandum of understanding. और उसमें क्या रहेंगे? तो board of directors की बात हुई है कि गवर्नमेंट जो होगा तो उसकी चेयर गवर्नमेंट नॉमिनी होगा, जो प्राइवेट होगा उसकी चेयर मैनेजमेंट नॉमिनी होगा. डायरेक्टर हायर एजुकेशन ऑफ द स्टेट विल बिकम ए मेंबर, द वाइस चांसलर ऑफ द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी, टू प्रिंसिपल्स, academicians and industry expert, they will join together to constitute the board of directors. मर्जर भी हो सकता है, सेम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपस में मर्ज कर सकते हैं एज पर रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी. और एफिलिएशन सिस्टम हट जाएगा तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिवर्सिटी होगा, इफ दे वुड बिकम ऑटोनोमस कॉलेजेस आफ्टर मर्जर, दे कुड इमर्ज एज ए वन यूनिवर्सिटी विद क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, या आपस में मर्ज हो सकते हैं. Two institutes of different management can also merge if they decide through an MOU, memorandum of understanding. मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स किस तरह का होगा, ये तो इंस्टीट्यूशन की बातें हुई. मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम बनने के लिए इंस्टीट्यूशन को मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा. दे कैन नॉट बी सिंगल डिसिप्लिन और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस. जब वो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनेंगे तो उसमें प्रोग्राम्स भी मल्टीडिसिप्लिनरी होगा. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं हो रहे हैं. दे माइट बी टीचिंग थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बट मल्टीडिसिप्लिनरी बनने के लिए कुछ आंकड़ा मैं यूजीसी का, नेशनल पॉलिसी का आपके सामने दिखाऊंगा, कैसे क्रेडिट किस तरह का अभी चर्चा हो रही है और डेवलप हो रही है. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फर्स्ट सेमेस्टर इसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको भी देखिएगा वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किए हैं, उसको भी थोड़ी बहुत मैं चर्चा करूंगा. फॉर इंस्टेंस 4-year डुअल डिग्री बैचलर्स प्रोग्राम हो सकता है बाय क्लस्टर इंस्टीट्यूशंस. एग्जाम्पल BA BEd या BSc BEd. मैं जिस वक्त NCT चेयरपर्सन रहा, इसको हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया 2014 रेगुलेशन में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेजेट नोटिफिकेशन अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आई वाज नो मोर ऑनरेबल जस्टिस वर्मा कमीशन. सो जस्टिस वर्मा कमीशन के अंदर हम इसको किया, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेन मुद्दा बनाया कि साहब +2 के बाद हम आगे एक 5 साल का प्रोग्राम 4 साल में कंप्लीट करेंगे जिसमें डुअल डिग्री मिलेगा. BA अलग डिग्री, BSc अलग डिग्री, BSc एंड BEd अलग डिग्री, BA अलग डिग्री, BEd अलग डिग्री. तो वो बाद में BSc के बाद MSc भी पढ़ सकता है और BEd के बाद MEd भी कर सकता है, या BSc BEd के बाद टीचर भी बन सकते हैं. And they can also do research. If they have gone through a 4-year program, they will also be entitled to get into directly enter into PhD programs. Dual degree program हो सकता है. UGC regulation 2022 को थोड़ा नजर डालिए. It talks about twinning programs, dual degree programs and joint degree programs. उसकी regulation हमारे सामने है. Dual degree program में उसके मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूँगा, उसमें MOU की ज़रूरत होगा. एक इग्नो का एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारे विश्वविद्यालय है, उससे आप समझ जाएंगे. हम इसको फारिग किए हैं और आगे भी ये चीज़ें बढ़ती रहेगी.
फॉर इंस्टेंस अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ये लागू होगा। यूजीसी का कहना है कि ये पीएचडी प्रोग्राम में डुअल डिग्री लागू नहीं होगा, पीएचडी डिग्री विथ अनदर डिग्री नहीं चलेगा। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में आप डुअल डिग्री ले सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इग्नो में हमने कहा आप इग्नो में एक डिग्री ले रहे हैं या बाहर से एक डिग्री ले रहे हैं, आप इग्नो से एक डिग्री डिस्टेंस लर्निंग से ले सकते हैं। अगर इग्नो से आप 2 डिग्री डिस्टेंस लर्निंग से लेंगे, लगभग 45 प्रोग्राम को हमने बास्केट में डाला, 45 प्रोग्राम को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप 2 डिग्री लेना चाहते हैं डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, दैट टू फ्रॉम इग्नो, तो आपको 1 सेमेस्टर का फासला देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेमेस्टर हमको जरूरत है कि एग्जामिनेशन शुड नॉट बी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। 1 सेमेस्टर का फासला होगा तो एग्जामिनेशन का भी फासला हो जाएगा, बिकॉज जनवरी एडमिशन एग्जामिनेशन इज इन दिसंबर एंड इफ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज जुलाई एडमिशन, द एग्जामिनेशन विल बी नेक्स्ट ईयर जून, देयरफॉर वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो नो साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स फ्रॉम डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। इस वक्त आगे जो फॉर्मुलेशन हायर एजुकेशन कमीशन आएगा उसकी फॉर्मुलेशन होगा, उसके हिसाब से हमें फिर इसको तय करना पड़ेगा। अभी तो सभी चीज़ें फॉर्मुलेशन में है, चर्चा में है, कुछ चीज़ें लागू भी हो गया है। रेगुलेटरी बॉडी तय करेंगे कि आप मेडिकल काउंसिल तय करेगा, भाई मेडिकल से अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं दूसरे से आप कर पाएंगे कि नहीं, दूसरी रेगुलेटरी बॉडी से। अगर आप लिबरल आर्ट्स कोई प्रोग्राम कर रहे हैं वो जायज़ होगा। एंड एज आई सेड अर्लियर, पीएचडी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस डुअल डिग्री प्रोग्राम। अब आपके सामने स्क्रीन में है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो फ्लेक्सिबल करिकुलम फ्रेमवर्क NEP 2020 कह रहा है, और इसी सिस्टम से आपकी करिकुलम बनेंगे। पहले हमारा करिकुलम ऑलमोस्ट 100% चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को छोड़ के हमारा करिकुलम 100% हमारा डिसिप्लिन बेस्ड हुआ करता था। लेकिन इस वक्त क्या होगा, तो इंस्टेड ऑफ STEM, STEM, it is now called STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics Education. So Science, Technology में liberal arts एक compulsory हिस्सा बनेगा। आपके जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे जो कंपलसरी होंगे, वोकेशनल बेस्ड कोर्सेज कंपलसरी होंगे, ये मुद्दा है NEP 2020 का। उसकी एक फॉर्मुलेशन में आपको दिखाऊंगा जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 160 क्रेडिट के अभी चर्चा में है। जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे तो उसमें इंडस्ट्री से प्रोफेसर्स, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आके इसको पढ़ाएंगे। व्हाई डिड आई से प्रोफेसर्स? बिकॉज नाउ हाल ही में UGC हैज allowed that those of similar experience but without a PhD, those who are industry experts of different professions, different job areas, different skill areas, they would become professor within the university or colleges, especially universities, they would be called as professors of practice. प्रोफेसर प्रैक्टिस भी इम्प्लीमेंट हो गया। देयरफॉर स्किल बेस्ड प्रोग्राम के लिए आपको इंडस्ट्री का जरूरत, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की एंगेज करना पड़ेगा। करिकुलम बनाने से लेके तमाम उसकी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वहाँ से लेके उसकी असेसमेंट ऑफ द स्किल बेस्ड कोर्सेज उसके भी करना पड़ेगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा, उसकी एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी सर्विस में कुछ क्रेडिट्स उसमें जाएंगे जो असेसमेंट में लगेंगे। Research and internship, which is almost 1/4, 40 credits in a 160 undergraduate program, credit program, almost 1/4 रिसर्च और इंटर्नशिप में जा रहा है। एनवायरमेंट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, आप सब वाकिफ हैं, वैल्यूज़ की ज़रूरत है लाइफ में और एक अच्छे इंसान बनने के लिए, और एनवायरमेंट अवेयरनेस और एनवायरमेंट कंसर्न, एंगेजमेंट विद द एनवायरमेंट विद द कम्युनिटी, इसके भी ज़रूरत है। ये कंपलसरी कोर्सेज होंगे। इंडियन लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट, ये बड़ा मुद्दा है। भारतीय धरोहर, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन लैंग्वेजेस। हमारा अभी तो 18 लैंग्वेज बट बहुत सारे डायलेक्ट्स है, ऑलमोस्ट 1650 डायलेक्ट्स देश में है। तो ये डायलेक्ट्स में प्री स्कूल एजुकेशन से डायलेक्ट में पढ़ेंगे जिसको आप कहते हैं मदर टंग। उसके बाद ग्रेजुअली दे विल कम अप विद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड हायर एजुकेशन में आप अपनी लैंग्वेज में रीजनल हिंदी में भी पढ़ सकते हैं बिसाइड्स इंग्लिश। इसकी जोर शोर से काम चालू है। स्किल बेस्ड कोर्सेज विल बिकम कंपलसरी एंड देयरफॉर ऑल दिस पुट टुगेदर विल बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक। कैसे, थोड़ी सी चर्चा करें। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चर्चा में है और दिल्ली विश्वविद्यालय इसको लागू किया 176 क्रेडिट के साथ। फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया है। तो 160 क्रेडिट्स डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर है आपकी 48 क्रेडिट्स रहेगा, बिकॉज NEP कह रहा है जितने भी क्रेडिट आवर्स होंगे हर साल 40 क्रेडिट्स होंगे।
जितने भी क्रेडिट्स होंगे वो क्रेडिट 50% आपको डिसिप्लिन के जाएगा, 50% नॉन डिसिप्लिन एरियाज. So discipline core 48, discipline elective 32, all put together 60 credit out of 160, 50% is going to the discipline core and electives. The rest of the credits, skill enhancement, ability, vocational 16, value addition courses 12, field internship, apprenticeship, community engagement 12 credits and research advanced discipline courses 40 credits. इसमें आपकी internship भी है, जो फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये 12, 14, 16 इसमें आपस में चर्चा चल रही है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है. बट मीनिंग देयर बाय टू कंक्लूड दिस पॉइंट दैट डिसिप्लिन कोर एंड इलेक्टिव डिसिप्लिन 50%, रेस्ट ऑफ द 50% स्किल, वोकेशनल, एबिलिटी एनहांसमेंट, वैल्यू, एनवायरनमेंट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रिसर्च के ऊपर जाएगा. लगभग जो 4th year will be dominated by research, and therefore after 4 years of undergraduate program one can directly go without doing a master's program to do a PhD program. So इसी क्रेडिट को आगे बढ़ाते हुए कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा. अगर आपकी इस तरह के डिफरेंट कोर्स की फॉर्मुलेशन होंगे तो उसमें एक नेशनल बैंक ऑफ क्रेडिट बना हुआ है, उसकी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे 2-4 मिनट, तो उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहेंगे. हर स्टूडेंट उसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपना खाता खोलेगा. बट उससे पहले सभी संस्था अपनी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर नहीं किए हैं तो उनके स्टूडेंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में दाखिल नहीं हो सकते. तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेप इज दैट क्रेडिट का पहले तो क्रेडिट का डेफिनेशन समझ लें. कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो मेन पढ़ा रहे हैं फेस टू फेस में, उनके 1 credit is 15 hours of classroom teaching across a semester. So 15 hours of classroom teaching and 30 hours of practicum is the same credit. So that means 1 hour of classroom teaching is equivalent to 2 hours of practicum. Open distance learning में हम लोग credit को वहाँ 1 hour 1 credit 15 hours of face to face of teachers teaching. In distance learning 1 credit is 30 hours of students learning. इसमें टीचर्स का कितना इनपुट है, कितना वर्कलोड है, उसको काउंट नहीं होता. स्टूडेंट के टर्म्स पर क्रेडिट को डिफाइन किया जाता है. एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स होंगे, दैट मीन्स एक साल में 40 क्रेडिट्स होंगे. सो देयरफॉर एक सेमेस्टर में 1 credit is equal to 1 hour of teaching per week over a semester of 12 to 14 weeks. आप एक सप्ताह में 1 घंटा पढ़ाएंगे 12 सप्ताह या 14 सप्ताह तक, तो वो कोर्स का वो क्रेडिट बना. या और 2 hours of practicum या 2 hours of distance learning for week over a 12 to 14 weeks. So therefore there it is 15 hours, for distance learning it is 30 hours. But distance learning 30 hours, though it is from students' point of view, it is equivalent to 30 hours of practicum in a face-to-face context. Therefore friends, academic bank of credit क्या है? This is an academic national academic depository. एक सर्वर है, नेशन वाइड नेटवर्क है, सर्वर है जो ऑलरेडी बैठ गया है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दाखिल हो रहे हैं और इग्नो उसमें शामिल है. और इग्नो के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इग्नो के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में शामिल हैं. और ग्रेजुअली मैनी इंस्टीट्यूशंस आर जॉइनिंग एंड आई होप दैट ऑल इंस्टीट्यूशंस विल जॉइन. देयरफॉर स्टूडेंट को क्रेडिट ट्रांसफर में फ़ायदा होगा, इंस्टीट्यूशन का आपस में क्रेडिट ट्रांसफर में फ़ायदा होगा. बिटवीन कंट्रीज, इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज के यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफर का जो जिगर है उसका फ़ायदा होगा और स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस they need to register in academic bank of credit or the national depository. स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. विल गो ऑन एक्यूमुलेटिंग क्रेडिट्स. जो मेन यूनिवर्सिटी में है तो उसमें ज़्यादा कोर्सेज कर रहे हैं, डिसिप्लिन के कोर्सेज कर रहे हैं, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रहेगा. अगर दूसरा उसी शहर में है, उससे और कोर्सेज स्किल बेस्ड कोर्सेज कर रहे हैं, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चला जाएगा. और जिसको अपना विश्वविद्यालय या कॉलेज उसको अप्रूव किया हो, उसकी स्टैट्यूटरी में बॉडीज में उसको अप्रूव करना जरूरी है. और दीज क्रेडिट एक्यूमुलेशन विल बी वैलिड फॉर 7 years. बट इंस्टीट्यूशन तय करेगा और स्टूडेंट के साथ मिलके
जहां 50% मिनिमम क्रेडिट उन्होंने लिया है जिस संस्था से, वो संस्था उसको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अवार्ड करेगा. सो 50% could be for me largely discipline, and the rest of the courses one can take from other disciplines. But हो सकता है almost 80% courses one is taking from one university, अपने विश्वविद्यालय कॉलेज से, 20% one is taking from outside. It depends on, but 50% is minimum to take a degree from one संस्था, one university. तो स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी की फाइनल बातें हैं. मल्टीडिसिप्लिनरी, टू कंक्लूड, 1 or 2 sentences before getting into skilling. संस्था मल्टीडिसिप्लिनरी बनेंगे, मल्टी डिपार्टमेंट्स होगा, डिसिप्लिन आपस में आदान प्रदान करेंगे. एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन से कोर्स लेंगे. डिसिप्लिन कोर एंड इलेक्टिव लगा के 50% रहेगा. 50% अपना वैल्यू बेस्ड, जॉब रिलेटेड, स्किल बेस्ड, रिसर्च, इंटर्नशिप. हालांकि रिसर्च अपनी डिसिप्लिन बेस्ड लार्जली होगा, बट रिसर्च कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू कम्युनिटी एंगेजमेंट, स्किल बेस्ड एनवायरमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट रिसर्च विल बी लार्जली फॉर द डिसिप्लिन, बिकॉज उसको अगर आगे PhD में जाना है तो रिसर्च इन द डिसिप्लिन इज एसेंशियल. सो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे. स्टूडेंट्स अपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज कॉलेज यूनिवर्सिटी में फारिग होगा, पास होगा, अप्रूव होगा. उसके बाद स्टूडेंट्स और कोर्सेज दूसरी संस्था से ले सकता है. अगर सेम शहर में है, डिफरेंट टाइम में कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ से ले सकते हैं, या डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग से ले सकते हैं. दिस कुड बी टुमारो एप्लीकेबल ऑल्सो टेकिंग ए कोर्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो. सो ये सिचुएशन में अब टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग जो कंपलसरी हो रहा है, स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी कंपलसरी हो रहा है, क्योंकि हमारा स्किलिंग, कॉम्पिटेंसी, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्लूडिंग 21st century skills, ये हम लोगों का कमी रहता है. तो देयरफॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड फाइनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किलिंग की ज़रूरत है. आपके सामने जो फिगर है आप देख पा रहे हैं, यहाँ थोड़ा बड़ा स्क्रीन है इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा. दिस इज द सिचुएशन एज एग्जिस्ट टुडे. आप एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं तक पढ़ेंगे. जनरली the labor force is unskilled labor and largely in the unorganized sector. Almost 80% of the labor force today is in the unorganized sector. जो प्राइवेट इन तमाम चीज़ों में वो सब शामिल हैं, उनको आगे बढ़ाने की जिगर है थ्रू दिस रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम्स, कि उनकी प्रायर लर्निंग को कुछ क्रेडिट आप रिकॉग्नाइज करें, उनको माफ़ करें, वो क्रेडिट उनको माफ़ होगा, रेस्ट ऑफ द क्रेडिट्स को कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री ले सकते हैं. इग्नो में हम इसको बहुत ही पहले से शुरू कर चुके हैं और हमारा बहुत सारे MOU से ये चल रहा है. अप टू 50% of the credits we are exempting those who are coming from either from the defense or from the ITIs and polytechnics and so on and so forth. और उसी बदले में हमारा MOU के तहत हम उनकी वर्क बेस्ड सेंटर, स्किल सेंटर्स को हम भी इस्तेमाल करेंगे. दिस इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग along with use of skill based training in the skill centers can take place. ये हम लोगों का उदाहरण है, आप लोगों का अपने अपने उदाहरण होगा, उसको थोड़ा गौर कीजिएगा. एलिमेंट्री के बाद अनस्किल्ड लेबर बनता है. सेकेंडरी 10वीं पाठ करने के बाद वो आगे सीनियर सेकेंडरी में जा सकता है, या एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद एक वोकेशनल सेकेंडरी पैरेलल सिस्टम आज की तारीख में है, पहले नहीं हुआ करता था, आज की तारीख में है. उसके बाद या वो पॉलिटेक्निक में जा सकता है 3 ईयर डिप्लोमा करने के लिए, या ITIs में 1 या 2 साल का सर्टिफिकेट करने के लिए जा सकता है. ITI से अप्रेंटिस से बन जा सकता है और उसमें क्राफ्ट्समैन कहा जाता है, बनेगा. पॉलिटेक्निक से वो ITI 2 ईयर्स फिर क्राफ्ट्समैन करेगा, वो टेक्नीशियन बनेगा. और सीनियर सेकेंडरी के बाद वो डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जा सकता है, जो 5 साल का पढ़ाई है वो डायरेक्ट इंजीनियर बन सकता है. और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद 16-17 में तो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकता है, वो उसको टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाएगा, और जो PhD करेगा उसको साइंटिस्ट कहा जाएगा. सो टेक फॉर एग्जाम्पल ए प्लम्बर और ए कारपेंटर. टुडे यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम स्कूलिंग ए प्लम्बिंग, एंड दैट प्लम्बिंग कैन गो अप टू ए PhD लेवल. PhD in plumbing is possible today in this country, and whatever will happen, जो भी उसके स्किलिंग प्लम्बिंग के बारे में स्कूल से लेके PhD तक पढ़ेंगे वो इंटरनेशनली बराबर है. किसके तहत? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के तहत. उसके थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर है, उसके तहत
वो बराबरी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रहेगा जो स्किल वो सीखेगा, ऐसा हमारा तय है। देयरफॉर उसका जो पढ़ना पढ़ाना, उसके सामग्री, उसके असेसमेंट, टेक्नोलॉजी लगेगा, ये इंटरेक्शन होगा, एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज़ होगा, ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव है। और ये जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है, जिसके बेसिस पर नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो इस वक्त चर्चा में है, वो उसके ऊपर बेस्ड है, ये हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाता है। उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। इस वक्त आपकी जो स्किल एम्प्लॉयबिलिटी जो सेक्टर है, उसकी हम लोगों की हायर एजुकेशन में थोड़ी बहुत स्कूलिंग भी ले लिया जाए तो इसमें ये सिचुएशन आपके सामने है कि स्किलिंग हायर एजुकेशन में कैसे हो रहा है। आपके पास कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जो एसोसिएट डिग्री प्लस फुल डिग्री देते हैं, जिसमें लार्जली स्किल डोमिनेटेड है। यूजीसी का बी वोक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, उसकी थोड़ी चर्चा करूंगा, वो किस तरह सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री की तरफ जा रहा है। स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज अ पैरेलल सिस्टम आफ्टर ग्रेड 8, ये भी है। स्किल यूनिवर्सिटीज देश में है, कुछ स्टेट्स स्किल यूनिवर्सिटीज दे हैव एस्टैब्लिश्ड, दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल। ITIs and polytechnics, they are also engaged in skilling besides theory, and iOS and state open schools, National Institute of Open Schooling and state open schools, ये भी skilling में involved है in a large scale, and iOS is involved in skilling. Diploma and degree colleges skill के ऊपर specialized, these are standalone, and those standalone have to become multidisciplinary in the future. IGNO, National Open University, जहाँ मैं बैठा हूँ, State Open Universities and Dual Mode Distance Education Institutions भी स्किलिंग दे रहे हैं। मैं IGNO का एक स्किलिंग का जिगर आपके सामने रखा। बी वोक आपके सामने है, जो इस वक्त 3 साल का प्रोग्राम चल रहा है। होपफुली द बी वोक विल ऑल्सो ग्रेजुअली लीड टू ए 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम आफ्टर +2। इसमें क्या कहा गया है कि आप 6 महीना का करेंगे इस वक्त सर्टिफिकेट, 1 साल कंप्लीट करेंगे डिप्लोमा, 2 साल करेंगे एडवांस डिप्लोमा और 3 साल करेंगे आप बैचलर्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन डिग्री आपको मिलेगा। और जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन की लेवल है, लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक यहाँ लागू है। लेवल 4 इज सर्टिफिकेट, लेवल 5 डिप्लोमा, लेवल 6 एडवांस डिप्लोमा, लेवल 7 बी वोक। आप नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जिस वक्त चर्चा में है यूजीसी का, उसको भी पढ़िएगा। NSQ वर्क बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग एंड नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वैसे भी यूजीसी। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क क्या कहता है स्किलिंग के बारे में, ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, आप जो मल्टीडिसिप्लिनरी बनाएंगे तो उसमें स्किल बेस्ड कोर्सेस आप दूसरे डिसिप्लिन से ले सकते हैं, अपना स्किल बेस्ड कोर्सेस दूसरे डिसिप्लिन वाले आपसे ले सकते हैं, तो उसमें मल्टीडिसिप्लिनरिटी बढ़ता है और स्टूडेंट के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी बढ़ता है। बट एम्प्लॉयबिलिटी इज नॉट ओनली वोकेशनल स्पेसिफिक, एम्प्लॉयबिलिटी इज ए होलिस्टिक कॉम्पिटेंसी, physical, mental, emotional, spiritual, and all kind of emotional, all value and so on and so forth, and 21st century skills, including leadership skills, communication skills, digital literacy skills, critical thinking skills. All these are part which belong to your discipline as well as the skilling and vocational and apprenticeship and these areas. So discipline may be competency, इसमें भी competency put together that becomes a holistic employability skill. Employability skill सिर्फ vocational skill के साथ सीमित नहीं है. A holistic personality development is a better skill, employable skill than just one vocational skill. तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क क्या कह रहा है, इसमें 10 लेवल है, इस वक्त उसको रिड्यूस होकर 8 लेवल करने की चर्चा है, हो भी गया होगा। लेवल 5 to 7 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और लेवल 10 हाईएस्ट रिसर्च PhD प्रोग्राम। ये प्रोसेस की बात करता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होगा, किस लेवल का स्टैंडर्ड का होगा, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होगा, उसकी बातें हैं। प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट अपने डिसिप्लिन एज वेल एज प्रोफेशन या जॉब रिलेटेड या टेक्निकल स्किल रिलेटेड या लार्जली प्रोफेशन या वोकेशन रिलेटेड, उसकी बात कर रही है 3 तरह की। डेप्थ कितना होगा उसमें स्पेशलाइजेशन, ब्रेड्थ कितना होगा उसमें मल्टी डिसिप्लिनरिटी कितना होगा। फॉर इंस्टेंस टुडेज इंजीनियर्स, आपको इंडस्ट्री कह रहे हैं इंजीनियरिंग में कोई कमी नहीं है पढ़ाई में, लेकिन what the industry needs is multi-skilled engineers who have expertise beyond engineering skills to other skills, तो उनको वो चाहिए। Therefore, it talks about breadth with this multidisciplinary. Besides your own specialization,
we must also have some inter or multidisciplinary understanding and application. Also, it talks about the kinds of concrete to abstract, kinds of teaching learning process. It also talks about the complexity of the knowledge. Knowledge has its own complexity, therefore the nuances or the complexity of the knowledge को समझना गहराई से. It also talks about professional skills, core skills. It also talks about responsibility. Responsibility का मतलब ये हुआ आप कुछ भी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जब जॉब में जाते हैं आप उसको निभाएंगे कैसे. How we will conduct yourself in that profession. How will you work? How will you engage? How will you collaborate? How will you communicate? How will you lead? And how will you innovate? So all these are part of the responsibility. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की एक लेवल 5 की जो फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उसकी झलक आपके सामने. इट टॉक्स अबाउट लेवल. साथ में देखिए प्रोसेस रिक्वायर्ड क्या करता है, जॉब क्या रिक्वायर करता है, उसकी क्लैरिटी है जो आपके डिसिप्लिन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से आप रखेंगे. प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह बंटा हुआ है. जब आप करिकुलम एक स्किल बेस्ड बनाएंगे आप इसी में बांटेंगे और इसी में आप अपनी लर्निंग रिसोर्सेज प्रदान करेंगे. इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी बनाएंगे और इसमें पढ़ाएंगे और स्टूडेंट को एंगेज कराएंगे इन एक्टिविटीज़ और इन एरियाज को आप एसेस करेंगे. दिस इज व्हाट इज अ स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी. उसको आप ट्रांसलेट करें नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में. आपके सामने है types of learning outcome, because teaching learning will be outcome based learning. Even in innovation, creativity could also be competency and outcome based learning. Outcome is innovation, diversified, divergent thinking. Convergent thinking is intelligence, divergent thinking is creativity. So types of learning outcome, एक example blue में लिखा हुआ है आपके सामने है और दूसरा red में the graduate should be able to demonstrate the acquisition of number 1 a comprehensive knowledge and content on coherent understanding. नंबर 2 procedural knowledge, वो कैसे होता है प्रोसेस में उसको भी सीखेगा. नंबर 3 the skills involved in those areas and application of the skills. and number 4 the capacity to extrapolate. कहने का मतलब है उसके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स हो गया, एटीट्यूड डेवलप हुआ, वो उसको काम में कैसे लगाएगा. दिस इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. जब एक्चुअल काम में जाएगा उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू एक्स्ट्रापोलेट, हाउ टू जितना जहन में गया उसको काम में किस ढंग से लगाएगा. Of course, twins will differ, even two individuals will differ in their understanding and application. However, that they can be governed by this framework. Vertical, horizontal mobility होनी चाहिए. School, vocational education and training, ITI, polytechnics, undergraduate BVoc, vocational education, integrated undergraduate education, general liberal arts education, social science, as well as skill-based education and skills university. ये आपस में इंडिपेंडेंट खड़े हैं. इनको जोड़ने के बाद ही हम स्किल की मल्टीडिसिप्लिनरी की बात आसानी से कर सकते हैं. सो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रहा. मैं मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम और उसमें मल्टीडिसिप्लिन प्रोग्राम में करिकुलम स्ट्रक्चर, अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम का एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया. उसके साथ साथ मैंने बातें किया कि ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कैसे होगा और स्टूडेंट्स इसको एक्युमुलेट करेगा और इसको भुगतान करेगा एक डिग्री के लिए, और जो बच जाएगा वो 7 साल तक रहेगा. 7 ईयर्स के बाद लैप्स कर जाएगा. विद इन 7 ईयर्स उसको किसी ना किसी तरह यूज़ करना पड़ेगा फॉर अदर प्रोग्राम्स. एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम 1 साल का 40 क्रेडिट्स, डिप्लोमा 2 years 80 credits, undergraduate 3 years 120 credits, and undergraduate with a research degree will be 160 credits, after which one can also go directly to do a PhD. उसके बाद में वोकेशनल एजुकेशन का देश का सिचुएशन आपके सामने रखा और उसमें क्या कमी है और किस तरह आगे हो रहा है फॉर्मुलेशन उसको सामने रखा, और ये स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा उसके एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, उसकी होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए चर्चा किया. इसके साथ अगर आपके कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो जो आपने लिखे हैं, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे.
Thank you very much, sir, for a very informative and interesting presentation. I hope our viewers have greatly benefited from your lecture. We have received quite a few questions. The first question is an MOU mandatory between universities to transfer credits in academic bank of credit? नहीं, आप संस्था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद आपके प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स आपस में मिलके वो कहेंगे कि स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में खाता खोलेगा, तो उसमें जितनी क्रेडिट एक्यूमुलेट करते जाएगा वो खाते में ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा। उसको ऑफकोर्स फीड करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा। MOU की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रजिस्टर। उसमें कोई MOU नहीं है, बट MOU विल बी अगर आप किसी के साथ मर्जर कर रहे हैं, कोई आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन रहा है या आपका स्टूडेंट दूसरे एक संस्था से सेम शहर से अगर वो कुछ कोर्सेस लेना चाहता है, डिफरेंट मैनेजमेंट की बिलोंग करते हैं, तो वहाँ MOU की ज़रूरत होगा। तो यहाँ यू हैव टू रजिस्टर योर इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट्स दे हैव टू रजिस्टर इन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वेबसाइट को जाइए और वहाँ आपकी संस्था और आपके स्टूडेंट्स उसमें रजिस्टर होना जरूरी है। Another question is that a viewer is wanting to know that what are the details of the vertical movement in education? वर्टिकल मूवमेंट मुझे समझ में आया नहीं सवाल से। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी या मूवमेंट कहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी इसी वक्त जो जनरल एजुकेशन पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में मान लीजिए, तो उसको वोकेशनल में वोकेशनल सब्जेक्ट एक ले सकता है। बी वोक अपनी जगह अलग खड़ा है और उसको एक वोकेशनल के जनरल एजुकेशन करने के बाद अगर वो 24 क्रेडिट्स का कि वोकेशनल का किसी वोकेशनल एरिया में 24 क्रेडिट्स आउट ऑफ 160 कर लेता है मान लीजिए, तो 24 क्रेडिट्स में उस वोकेशन में वो आगे जा सकता है। उसको इस वक्त वो रास्ता नहीं है। दूसरा, जो वोकेशनल में पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने कहा हम 50% उसको एक्रेडिट करते हैं इग्नू में, 50% उसकी प्रायर लर्निंग को, स्किल को हम रिकॉग्नाइज करेंगे और 50% हमसे पढ़ेगा और हमसे डिग्री ले जाएगा। ऐसा प्रावधान हम लोगों ने किया है जो चालू है, विच इज कंटिन्यूइंग, विच इज इन प्लेस। तो देयरफॉर जो वोकेशनल में पढ़ रहा है वो जनरल एजुकेशन पढ़ने के लिए आएगा। जनरल एजुकेशन कह रहा है कि मैं आपके वोकेशनल को नहीं मानता, डिग्री ट्रांसफर नहीं करूंगा, आपको फिर 3 साल या 4 साल अंडर ग्रेजुएट करना पड़ेगा। हमारा सिस्टम ऐसा डेवलप हो रहा है जो NEP जिगर कर रहा है और इस वक्त हो रहा है कि जनरल और वोकेशनल एजुकेशन में आपस में क्रेडिट ट्रांसफर और रिकॉग्निशन ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जिसको आप कहेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, वो भी हो सकता है, या रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर क्रेडिट्स जो मैं एक्यूमुलेट किया हूँ, पढ़ा हूँ, मेरा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में है, वो आपस में अगर हो तो मैं हॉरिजॉन्टली उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ और वर्टिकली मैं जनरल एजुकेशन पढ़ा हूँ, अगर 24 क्रेडिट किया हूँ स्किल में, मैं स्किल के ऊपर जाके स्पेशलाइज्ड मास्टर्स डिग्री इन दैट स्किल एरिया फ्रॉम ए स्किल यूनिवर्सिटी में कर सकता हूँ। इस वक्त तो प्रावधान बड़ा कमज़ोर है जो आगे होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ NSQF would increase employability of higher education learners? देखिए, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं इस वक्त हम इंडस्ट्री से छूटे हुए हैं, फासला है। हमारा स्किल बेस्ड कोर्सेज इंडस्ट्री वाले मिल के प्रोफेसर के साथ अगर करिकुलम बनाएं, लर्निंग रिसोर्सेज बनाएं, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाएं, स्टूडेंट कैसे एक्टिविटी में एंगेज होगा उसको बनाएं, स्टूडेंट का हैंड्स ऑन स्किल बेस्ड, चाहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या कोई स्किल सेंटर में वहाँ कैसे हो, हर जगह मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग और मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें एक तरफा कि इंडस्ट्री या कंसर्न बिजनेस जो भी है उसके स्किल के एरिया में, वो हमारा डिसिप्लिन एरिया में इतने ज़्यादा नहीं, दूसरी स्किल एरिया में वो शामिल हो। दूसरा, NSQF कह रहा है जो भी स्किल जिस लेवल पर आप देंगे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्कूल से लेके PhD तक। PhD इन प्लम्बिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर ऐसा है तो उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय कर दिया। अगर वो स्टैंडर्ड के तहत हमने करिकुलम बनाए, लर्निंग रिसोर्सेज बनाए, टीचिंग लर्निंग किए, स्टूडेंट को एंगेज किए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग प्रैक्टिकल में जाके किया और अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप उसमें किया जो कंपलसरी किया है, उस स्टैंडर्ड के तहत स्टूडेंट विल बी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव।
उनकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होगा. Therefore, NSQF directly contributes to enhancing the standard of the skill-based education as well as competency-based education as well as employability. और finally, NSQF के ऊपर आपके National Higher Education Qualifications Framework आधारित है insofar as competence and skill-based courses are concerned. डिसिप्लिन में काफ़ी छूट आपको खुद ही तय करना के लिए भी है, बट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आप पढ़िएगा, उसमें इस वक्त चर्चा में है. एनी टाइम इट विल बी फाइनलाइज. प्लीज टू कंट्रीब्यूट और वहाँ भी जो भी मन में सवाल है उसको उठाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन प्ले इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च? ओह अच्छा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है. मल्टी डिसिप्लिनरी होगा तो मेरा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, मेरी दृष्टिकोण बढ़ेगा, माई मेंटल हॉराइजन वर्ल्ड व्यू बढ़ेगी, मेरी पर्सनालिटी ज़्यादा सुदृढ़ होगी और मेरा नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होगा, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ेगा. ये तो ज़रूर है. देन इफ आई एम कन्फाइंड टू माई डिसिप्लिन, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मल्टी डिसिप्लिनरी होने से रिसर्च का कुछ बढ़ जाएगा ऐसा कोई नहीं है. रिसर्च आप अपने डिसिप्लिन में कर सकते हैं. इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू डू ए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, तभी आप मल्टी डिसिप्लिनरी करेंगे. मल्टी डिसिप्लिनरी करने से ही या हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में कीजिएगा ताकि रिसर्च का क्वालिटी बढ़े, ऐसी बात नहीं है जो मैं समझता हूँ. तो आप अपने डिसिप्लिन में बेसिक फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड अदरवाइज भी रिसर्च कर सकते हैं. बट जहां मल्टी डिसिप्लिनरी की जरूरत होगा, ये कोई नई बात नहीं है. आज की रिसर्च, कई रिसर्च हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो रही हैं. अगर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है तो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा. बट टू कंक्लूड, हम मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी अगर बेस्ड रिसर्च करें तो रिसर्च का एप्लीकेबिलिटी कीमत बढ़ता है, बिकॉज इट विल बी एप्लीकेबल टू नॉट ओनली योर डिसिप्लिन बट ऑल्सो अक्रॉस डिसिप्लिन्स, रिलेटेड डिसिप्लिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the time limit till which credits will be stored in the academic bank of credit? मैं जिक्र किया था आपको कि आपके 7 years इस वक्त है, कल को बदल सकता है. 7 साल आपकी क्रेडिट्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रहेगा. आप 3 साल कंप्लीट करके अपना अंडर ग्रेजुएट ले लीजिए. फिर जब बच जाएगा तो आप कहेंगे मैं इसको एक्यूमुलेट करके मैं कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लूँ, या उसको आगे फिर आके बढ़ा के मैं कुछ एक्यूमुलेट करके 4th ईयर रिसर्च डिग्री ले लूँ, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, BA रिसर्च और BSc रिसर्च लूँ, तो आपके 7 साल तक रहेगा. बट उसके जो लेवल ऑफ क्रेडिट होगा, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, उसी लेवल का वो माना जाएगा. दिस विल बी एन अंडर ग्रेजुएट क्रेडिट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ क्रेडिट होना जरूरी है. सो देयरफॉर आपके अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा में ये काम में लगेगा और ये अंडर ग्रेजुएट क्रेडिट को आप कल को पोस्ट ग्रेजुएट में एनहांस करके ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लर्नर्स फ्रॉम रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स would get the benefit of multidisciplinary education in the light of clustering, as adjoining higher education institutions will be far away from each other. देखिए बात तो सही है, आपने सही बताया. 2-3 बातें आपने रखा इसमें. एक तो रूरल एरिया में दूर दूर कॉलेजेस हैं तो वहाँ ले नहीं सकते, बिल्कुल ले नहीं सकते. देयरफॉर आप डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग से लेंगे. इस वक्त 40% आप स्वयं से भी क्रेडिट ले सकते हैं, जो आपकी 60% में क्रेडिट में शामिल होकर आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा. तो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग से आप क्रेडिट दूसरे से ले सकते हैं, संस्था से, स्वयं से ले सकते हैं. डिस्टेंस लर्निंग से दूसरी संस्था से भी आप ले सकते हैं. दूसरा कि आप डुअल डिग्री भी ले सकते हैं. एक संस्था से रूरल एरिया में कर रहे हैं, दूसरा डिग्री आप डिस्टेंस लर्निंग से साइमल्टेनियसली ले सकते हैं. तो ये भी फायदा है. तो लेकिन जो सो फार एज फिजिकल डिस्टेंस इज कंसर्न, तो दो अगर कॉलेज बहुत दूर में है तो स्टूडेंट उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा, चाहे आप MOU करें, कुछ भी करें, तो इट्स नॉट पॉसिबल. अगर सेम शहर में है, छोटे शहर में क्यों ना हो, 2 कॉलेज हैं तो आपस में कर सकते हैं. अगर वो टाइम टेबल आपस में क्लास नहीं कर रहा है तो टाइम टेबल अलग अलग है तो उसको कर सकते हैं. लेकिन आपका सवाल जायज है. Another question is how is multidisciplinary education different from interdisciplinary education? You see, interdisciplinary education, जैसे मैं एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स पर हूँ, एजुकेशन का स्टूडेंट मेरा इस वक्त है,
मेरा फील्ड ऑफ स्टडी एंड टीचिंग एंड लर्निंग इज इन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें कॉग्निटिव डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन फॉर इंस्टेंस, तो मेरे को इकोनॉमिक्स भी पढ़ना जरूरी है और उसका एप्लीकेशन इन एजुकेशन जानना जरूरी है। इसको आप मल्टी डिसिप्लिनरी कह सकते हैं, बट मैं इसको इंटरडिसिप्लिनरी में लूंगा। जो NEP मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहा है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रॉम अनदर डिसिप्लिन, स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स कैन टेक ए कोर्स, सर्टेन क्रेडिट कोर्स फ्रॉम म्यूजिक, और कल को फिजिक्स में नहीं जाना चाहता, अगर म्यूजिक में उन्होंने 24 क्रेडिट्स तक कमा लिया, एक्यूमुलेट किया, तो कल को म्यूजिक में करियर बना सकता है, म्यूजिक में हायर स्टडीज में जा सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी मेरा एबिलिटी, मेरा वर्ल्ड व्यू, मेरा कैपेसिटी को बढ़ावा दे रहा है। और इंटरडिसिप्लिनरी, दैट जनरली व्हेनेवर वी आर टीचिंग एनी डिसिप्लिन, generally as a good teacher we borrow from other disciplines to give an example, to connect to them, to relate to them, to give an activity, to give an assignment and so on and so forth। या चर्चा में लाते हैं, सेमिनार में लाते हैं, डिबेट में लाते हैं, बट एक्सक्लूसिवली उसी डिसिप्लिन का इतना क्रेडिट कोर्सेज को हम नहीं पढ़ते हैं, और जो क्रेडिट ट्रांसफर में आता है, इंटरडिसिप्लिनरी क्रेडिट ट्रांसफर में नहीं आता है। So therefore multidisciplinary you have to transfer credits, but generally we have been teaching as a good teacher in interdisciplinary way। Multidisciplinary from another discipline, you exclusively you are taking up a course for which credit transfer is possible and so on and so forth। ये NEP का formulation है। Another question is, can skill based course be done with medical and non-medical courses? मेडिकल नॉन मेडिकल कोर्सेज, जैसे मैंने बताया, रेगुलेटर्स विल डिसाइड कि आप मेडिकल में मान लीजिए MBBS कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक स्किल कोर्सेज और किसी से म्यूजिक फॉर इंस्टेंस आप करेंगे, ट्रांसफर होगा। NEP 2020 ये फॉर्मुलेशन रख रहा है आपके सामने कि अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं या सर्जरी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक म्यूजिक या अदर सोशल साइंस या और कोई कंप्यूटर साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट की कोई कितनी क्रेडिट की कोर्स आप पढ़ सकते हैं, ये फॉर्मुलेशन है। बट रेगुलेटर्स आर येट टू कम अप कि साहब इसकी फॉर्मुलेशन क्या होगा। बट UGC का मल्टी डिसिप्लिनरी ये कह रहा है, NEP 2020 इसको तो मान्यता दिया है, ये मुद्दा है, फाउंडेशन है। सो देयरफॉर वी एक्सपेक्ट दैट टुमारो मेरे ख्याल बाय दिसंबर जनवरी तक अगर आ जाए नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन, उसके बाद ये सब रेगुलेटर्स दे वुड बिकम स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज एज पर NEP, और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नया बनेगा, तो वो सब इसकी चर्चा करेंगे और तय करेंगे। और जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ये सारे कुल मिल के बैठ के एक ही संस्था में बैठ के ये तय करेंगे। सो फॉर्मुलेशंस आर कमिंग अप एंड फॉर मी इट इज पॉसिबल। The next question is, please suggest whether multidisciplinary education will be better for students in conventional universities or open universities? नहीं, ये तो सबके लिए कन्वेंशनल, ये तो एक जरिया है। ट्रक में आप सामान लेके जाते हैं तो सामान का कीमत है, ट्रक तो वाहन है, फेस टू फेस सिस्टम एक वाहन है, और उसी वाहन में एक कैंपस सोशलाइजेशन है, कैंपस कल्चर है, इंटरेक्शन है, वो एक फ़ायदा है। डिस्टेंस लर्निंग में वो इंटरेक्शन ऑनलाइन होता है, वर्चुअल होता है, कभी कभी फेस टू फेस होता है, थोड़ी बहुत इस मामले में नुकसान है। तो लेकिन दोनों को मल्टी डिसिप्लिनरी फ़ायदा है। ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग या फेस टू फेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपकी डिग्री, और UGC अभी भी किया है और आगे भी ये मान्यता है, NEP कह रहा है, ये मोड ऑफ डिलीवरी फेस टू फेस, डिस्टेंस, ऑनलाइन, ब्लेंडेड, इसका सभी एक बराबर हैं। तो आप कहीं से भी पढ़ें और किसी से भी एडिशनल कोर्स लें और अपनी किटी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में शामिल करें। सो देयरफॉर फेस टू फेस में जो पढ़ते हैं उनके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी उतनी ज़रूरी है, और ख़ास करके और जो डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते हैं। डिस्टेंस लर्निंग वाले थोड़ी सी इस मामले में आगे हैं, क्योंकि वो दूसरी आसानी से डिस्टेंस लर्निंग से दूसरे से कोर्सेस ले सकते हैं। फेस टू फेस जो पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन या डिस्टेंस दूसरे डिसिप्लिन का कोर्सेस या स्किल बेस्ड कोर्सेस या एनवायरनमेंट कोर्सेस ले सकते हैं। तो दोनों की मल्टी डिसिप्लिनरी की तो ज़रूरत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ डिलीवरी। We will take up the last question. Will skill-based programs also be taught in mother tongue? Yes, अभी इस वक्त स्किल बेस्ड कोर्सेस हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, IT हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, एजुकेशन हो, मैनेजमेंट हो, या ह्यूमन राइट्स हो, या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो, या प्रोग्राम फॉर पंचायत राज हो, या कोई NGO के लिए हो,
और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए हो, ये तमाम जितनी सारे हैं, NEP फॉर्मुलेशन ये कह रहा है कि लिबरल आर्ट्स एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप एंड एप्लीकेशन इन प्रैक्टिस विल बी कंपल्सरी अक्रॉस द बोर्ड। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, इंक्लूडिंग मेडिकल इंजीनियरिंग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें सारे स्किल भी शामिल होंगे, स्किल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स भी शामिल होंगे। अपना डिसिप्लिन का तो स्किल है ही है, प्रोफेशनल प्रोग्राम में तो डिसिप्लिन का स्किल डोमिनेट करता है। दूसरी बात यह है कि मदर टंग, आप मेडिकल इंजीनियरिंग ये तमाम एरियाज में आप मदर टंग में ही पढ़ाएंगे इन फ्यूचर, वो प्रावधान रहेगा। दो इंग्लिश विल कंटिन्यू, इंग्लिश भी रहेगा। और इस वक्त मेडिकल इंजीनियरिंग काफ़ी सारा लार्ज स्केल में हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहे हैं, क्योंकि हम मदर टंग में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, जूझ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं मदर टंग में, समाज में भी जिएंगे, अंग्रेजी में नहीं जीते हैं हम। सो देयरफॉर ये हमको ज़्यादा फायदा होगा। इसका मतलब नहीं कि अंग्रेजी हट जाएगा, कल को विदेश के साथ और देशों के साथ हमारा वार्तालाप होगा, एक्सचेंज होगा, तो उसमें अंग्रेजी की ज़रूरत होगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात है। आप अपनी मदर टंग, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश लीजिए, और एक कोई स्टेट का लैंग्वेज लीजिए, तमिल लीजिए या बंगाली लीजिए, या माई लैंग्वेज उड़िया लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जर्मन, फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं। इस वक्त चाइनीज़ हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में चाइनीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज 2 कंट्रीज आर कमिंग अप इन ए ग्रेटर स्पीड। सो देयरफॉर मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और राजभाषा, या आप उसको नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं हिंदी, तो जिसमें ये आगे कार्रवाई प्रावधान बढ़ेगा। और मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी में पढ़ने पढ़ाना करने से आपकी कोई क्वालिटी कम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हाल ही में रशिया गया था, तो रशिया में रशियन अंग्रेजी नहीं समझते, और जर्मनी में जर्मन, फ्रेंच में फ्रेंच, स्पेनिश पढ़ाते हैं, तो उनकी जो लिटरेचर है दैट इज रिचर देन द इंग्लिश लिटरेचर। बाय द वे, रशियन साइंटिस्ट्स आर टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड, इवन अमेरिकन साइंटिस्ट्स। मैं दोनों देश विजिट किया हूँ, इसलिए कह सकता हूँ। सो अमेरिकन साइंटिस्ट दे स्टिल कंसिडर रशियन साइंटिस्ट एज सुपीरियर, उनको फेयर करते हैं। और आपको पता है जो सोयूज पहले चंद्रयान उसको भेजे थे तो रशिया भेजा था, जो अमेरिका भेज ही नहीं पाया था। तो आज की तारीख में अमेरिका रशिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में डरता है इन ए वे। सो देयरफॉर वो तो कोई अंग्रेजी नहीं जानते। चाइना में जो हो रहा है प्योर चाइनीज मैंडरीन में हो रहा है। मैं तो चाइना 20 बार गया हूँ। सो देयरफॉर चाइनीज नेवर स्पीक इंग्लिश। आजकल थोड़ी बहुत सीख रहे हैं, तो कितना ऊपर चले गए, नेक टू अमेरिका टुडे इन ऑल द स्पीयर्स। सो देयरफॉर मदर टंग में कोई कमी नहीं है, बल्कि होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम इंग्लिश और फ्रेंच, जर्मन, रशियन और जो स्पेनिश तमाम चीज़ें हैं जो उनकी साइंटिफिक डिस्कवरी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं इंग्लिश के कारण, तो वो भी तो है। सो देयरफॉर आई विल कंपेयर जॉन ड्यूई इंग्लिश ऑफ अमेरिका and Lev Vygotsky of Russia. जॉन ड्यूई डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखा, वो शोर मच गया, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट एजुकेटर बन गया। और उसके 30 साल के बाद कंटेम्प्रेरी लेव वाइगोत्स्की, जिसको आप पढ़े हैं, वाइगोत्स्की फ्रॉम रशिया, जब उसका ट्रांसलेट हुआ 30-35 साल के बाद, अब वाइगोत्स्की सेम अमेरिकन एजुकेटर्स दे से वाइगोत्स्की इज ग्रेट, जॉन ड्यूई इज ओके, सो वाइगोत्स्की इज ग्रेटर, सम पीपल से। इन फैक्ट the social constructivism, culture, language, उसके जो डीपर अंडरस्टैंडिंग वाइगोत्स्की दिया है, जो जॉन ड्यूई नहीं दिया। जॉन ड्यूई एक डेमोक्रेसी की बात किया है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसलिए उसकी किताब का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। देयरफॉर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कोई भाषा का कोई मायने नहीं रखता, चाहे आप इंग्लिश में पढ़े, जर्मनी में पढ़े, फ्रेंच में पढ़े और मदर टंग में पढ़े। मदर टंग में आप बेहतर पढ़ पाएंगे। बचपन से अगर फ्रेंच सीखे हैं तो फ्रेंच में पढ़िए, लेकिन मदर टंग अगर बचपन से, एंड लोकल डायलेक्ट्स, more than 1,650 local dialects, including tribal dialects. There are difference in dialects within the same district in a state. उसके माध्यम से स्कूल से पढ़ेंगे, माहिर होंगे। उसके आगे फिर आगे अंग्रेजी सीखिए। अंग्रेजी की जगह मैं स्पेनिश सीखूंगा। कल को ये तय हो रहा है कि अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज की जगह स्पेनिश लैंग्वेज डोमिनेट कर रहा है, कल को अमेरिकन लैंग्वेज स्पेनिश भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंग्लिश हट भी सकता है। बिकॉज ऑफ द कॉमनवेल्थ वी अप्रिशिएट इंग्लिश, बट वी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन लिटरेचर एंड साउथ अमेरिकन लिटरेचर। जितने बड़े बड़े एफएमिस्ट एजुकेटर्स हैं, दे आर साउथ अमेरिकन्स, चाहे पॉल इवान इलिच हो, चाहे कितने सब हो, ये सब साउथ अमेरिकन्स हैं। दे हैव रिटन इन पोर्टुगीज, दे हैव रिटन इन स्पेनिश।
सो वो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ. सो देयरफॉर आप कह नहीं सकते कि साहब इंग्लिश हैं तो हम सब कुछ हैं, ऐसी बात नहीं है. हमारा मदर टंग में हो सकता है. इसके एक लास्ट में मैं जोड़ूंगा टू कंक्लूड दैट हमारा मदर टंग में इसलिए जोड़ना जरूरी है, हमारा राजभाषा में इसलिए जुड़ना जरूरी है कि हम भारतीय धरोहर, भारतीय संस्कृति, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो काफ़ी तेज हैं, जो हमारे नॉलेज सिस्टम काफ़ी हद तक वर्ल्ड में फैला हुआ है. भारतीय गणित उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. भारतीय गणित घूम फिर के मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड सो ट्रिगोनोमेट्री ये होकर हमारे सामने आ गया. बट भारतीय गणित उससे ज़्यादा ऊंचा है, जिसको आप शायद गलती से मेरे समझ में वैदिक मैथमेटिक्स कह देते हैं. फॉर मी देयर इज नथिंग लाइक ए वैदिक मैथमेटिक्स, इट्स कॉल्ड भारतीय गणित. सो देयरफॉर भारतीय गणित बहुत ऊंचा है देन द सो कॉल्ड इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड अरिथमेटिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसमें कमी क्या है? और आज की तारीख में जो वोकेशनल एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल हमारा कारपेंटर, ये तमाम लोग देखिए, मैं तो गांव से हूं, आई कैन वेरी वेल विजुअलाइज, दे आर, वो तो माहिर है जी. आप कोई भी जॉब लीजिए, ट्रेडिशनल जॉब, उसमें वो माहिर हैं. उनके सामने आज की टेक्नोक्रेट्स कुछ भी नहीं है. अगर देखा जाए उनके पास देहाती ज्ञान था, इंडिजिनस नॉलेज, जिसको मैं अगर थोड़ी सी हिम्मत करके कहूँ, विजडम, ट्रेडिशनल विजडम उनके पास था. और शहर में आने से विजडम बढ़ जाता है, ये मैं नहीं मानता, कम से कम मैं एक्सपीरियंस किया नहीं हूँ. सो देयरफॉर आवर मदर टंग, आवर रीजनल लैंग्वेज, आवर नेशनल लैंग्वेज या राजभाषा एंड आवर ट्रेडिशनल नॉलेज और टेक्निकल वोकेशनल स्किल्स में, जिसको आज की तारीख में कहते हैं लोक विद्या, ये सरकार उसको सामने रखा है. आप इंडियन नॉलेज सिस्टम एजुकेशन मिनिस्ट्री का वेबसाइट में जाइए और इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो डिपार्टमेंट्स बन रही हैं आईआईटी खड़गपुर और दूसरी जगह में, वहाँ जाइए. बेंगलुरु में इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर में बनी है. तो ये सब अभी सामने आ रहा है. इसको लोक विद्या कहते हैं, जो कॉमन पीपुल्स वाइज नॉलेज या स्किल एंड कॉम्पिटेंसी. और ये बहुत बड़ी बात है देन व्हाट वी आर स्टडिंग एज वेस्टर्न मॉडल्स. ये मेरी मानना है. थोड़ा इसके ऊपर सोचिएगा, हो सकता है आप इसमें सहमत हो और आगे बढ़ें. बहुत बहुत शुक्रिया. So viewers, with this we will conclude today's session. I once again thank today's resource person Professor Santosh Panda for a very enriching session and request our participants to go through the e-contents and videos available in Swayam portal that you can access from the link provided to you in the welcome message from Swayam. Also, please attempt the 15 discussion forum MCQs and 35 final tests MCQs between 24th to 26th November. Participating teachers who will secure 50% and above both the tests together will get the course completion certificate. Best wishes. Thank you. थैंक यू वेरी मच. आप सब शामिल हुइए, स्वयं के अंदर जाइए, ये सब डाउनलोड करिए, इसको सेव करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए. फॉर अस दिस आर ओपन रिसोर्सेज, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट वाइडली. एंड स्वयं के अंदर जाइए, डिस्कशन फोरम में शामिल हुइए और ये 2 टेस्ट को दीजिए. कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है टेस्ट. अगर आप थोड़े बहुत पढ़ेंगे तो आपको NEP के बारे में भी जानकारी है और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी है. तो वी विश दैट यू इन अ लार्ज स्केल successfully complete the and get the certificate of NEP PDP. Thank you very much. Thank you.
Before I start with the actual presentation of the policy itself, I will spend a few minutes with respect to the relevance of education in the present context. A lot of things have been asked to me in public with respect to why at this time an educational policy, what kind of relevance does it have in the context of India and the context of the global developments. And always you have to articulate some aspects of it. Of course, first we all recognize there's more than 3 decades since we had the last one, and there are several developments that have happened. India, of course, will have the highest population of young people in the world over the next decade, and we recognize that nearly 50% of the population will be below 35 years of age, aspiring for high quality education. This democratic dividend certainly has to be taken advantage of. I don't think we have discussed it in several platforms. We have debated it, and certainly this is a direction and aspiration for the country which we have to realize. Globalization and demands of a knowledge economy and knowledge society call for emphasis on the need for acquisition of new skills by learners on a regular basis for them to learn how to learn and become lifelong learners, a critical consideration to be addressed appropriately. And that is where this education policy certainly has focused on. Changes in knowledge landscape, especially science and technology, I don't have to say here, but advances in big data analytics, machine learning, artificial intelligence, all demand skilled workforce involving mathematics, computer sciences, data science, as well as multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, and humanities. The education of future need to be reconfigured in order to meet the goals of the global education development agenda. We are a part of that. The goal 4 of the Sustainable Development Goals 4 of 2030 that seeks to ensure inclusion and equitable quality education and promote lifelong learning for opportunities for all. So this is broadly just to give it kind of a flavor of the kind of consideration probably the people who matter in terms of defining when to come out with a policy thought about. Now, how did we go about? A little bit of that also is of interest for the audience here. The process, of course, was that we had the members of the policy committee with the government set it up. And then we had a members of a drafting committee. We thought that besides the policy framing, we also need to bring it up in a way in which it can be presented. We had a special drafting committee. It had members of the policy committee also. And then we had a set of members, experts, who provided a kind of a technical secretariat support for doing this. And not to be satisfied with it, this is where I have my own strong views. The question of being independently evaluated with respect to the type of presentation we are making, ideas that we have created, and the strategy we have crafted. We put certain peer reviewers, people who are away from the policy formulation, who are very well aware of the kind of educational system, the academic system this country over the years, and therefore competent enough to give us very vital inputs about the first level of drafting this policy. So there were peer reviewers here. Discussions and consultation, we went through a very, even though this particular policy was initially having a basis of previous policy document, in fact, 4 years of work, very intense work had gone through in the formulation of this policy earlier itself. Documentation from downward consultations were there, submissions from individuals and groups were there. So there was the previous Honorable Minister of Education. We had also the TSR Subramaniam Committee and many others. So we had many things to fall back on. The question was to review them, to adopt them, and to see where we need to move extra efforts. And that is where we saw that discussions and consultations with the different stakeholders, including organizations, institutions, and individuals. We had quite a number of inputs which were new, which had very unique in terms of things which were not earlier presented or considered for discussion. And of course, when everything was ready and when we made an initial presentation to the ministry, they felt that ultimately to go into the public domain is a national, very important national document. We need to get the public responses of what they are in for the future of education. We got more than 2.5 lakh responses from both from the school and the college education, higher education point of view. So that was another major thing. We went through a consultation with the state educational authorities, including in many of the states, we had also consultation with the state ministers.
And then we had a review. So that when the policy was in the near final stages, the number of reviews were conducted by the Honorable Prime Minister himself. In fact, he went through every aspect of the policy and every items of the policy, and he wanted to make sure that there is a level of pragmatism and the ability to carry this forward in the implementation domain. So this is one of the important things that the Honorable Prime Minister, he came out with several interesting suggestions also, I should mention. So that is the other part of it. And finally, we got the cabinet approval on the 29th of July 2020. Immediately following that, for a number of measures, the first and foremost was to make sure that there is a very intense familiarization process for this. So major conferences with chancellors, vice chancellors, directors of higher education institutions, other high-level functionaries were convened. These are meetings convened by UGC and Ministry of Education and addressed by Honorable Prime Minister and His Excellency the President of India. So these were kind of things that were also carried. This also underscored the importance at the highest level that they attach to the policy. And now we are in the stages, and I will say at the end of my talk a little bit about how the concerned agencies and the ministry is moving towards the implementation. Now, to just give a framework for the policy provides an integrated and flexible approach to education. It has kept the interconnectedness, the various phases of education in mind, and how the same will enable continuity, coherence, and processes to ultimately realize an end-to-end educational roadmap for the country. An articulation of a broad view of education encompassing the holistic development with special emphasis on kindling of the creative potential of each individual in its richness and complexity has grown increasingly popular in the recent years, several domains of discussions. The policy thus aims to have it aims at the development of the 21st century skills. I don't have to re-emphasize what these 21st century skills are here for the students while giving them the flexibility, making choices consistent with the dynamics of a knowledge society. Before we go straight into the higher education and go into the details of the same, a little bit about the connection between the school education and the higher education. We do recognize, all of us, and the policy does so, the interconnectedness of the various phases of education. I mentioned it earlier. School education is of intrinsic importance, there is no question. How a student experiences the schooling phase of education could have a significant influence on those subsequently pursue higher education, including professional and vocational, besides, of course, helping to lay the foundation for lifelong learning. So keeping this in mind, I'm trying to first put the overall policy element, the element that is gone into the policy as a part of the academic side, not just on the governance and other areas. We have the early childhood care and education, home education, Anganwadis and preschools. One of the very key elements, because we did make transformatory recommendations in the context of the early school education. I will say a few words about it in the subsequent projections. And right now it is divided over a 15-year period of foundational, preparatory, middle, and secondary. We'll see the details of that. On the higher side, of course, we have the undergraduate, general education, teacher education, professional and vocational to focus a little bit. And then we have the postgraduate, masters, and PhD, need not be emphasized here. And ultimately, a national research foundation, a unique institution that will spur the research, and particularly in the educational institution and university system particular. And then, of course, we have areas like lifelong learning, adult education, and many other areas that have been also including the use of technology for education. These are all part and part of. So this is just the broad elements of the policy which you have touched upon in the policy. And I will, of course, as requested, I will try to concentrate on the higher education, but not before saying a few words about the kind of things that we have thought about in bringing the school education to a new domain. The extent 10 plus 2 structure is what the early school education will be. It will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5 plus 3 plus 3 plus 4 covering the ages 3 to 18. I have shown it here in terms of 4 levels. The foundational level where the policy, this is the education starts, unlike at 6 years, now it starts at 3 years. 3 to 8 years is what we characterize the first 5 years as the foundational
phase of the school education, 3 years of pre-primary, preschool, and then we have a primary education, which is first and second class, the grades. So you have the 5 years here. What is important in this phase, which will take you up to the age of 8, is the fact that the policy recognizes the individual differences in the cognitive development of children at this stage, and therefore formal structured learning will be absent during these 5 years. So the important thing is that each child has to be evaluated with respect to its growth of the brain, and these are not uniform, so there is no linear pattern in which the growth occurs. And it's also important that 85% of the brain virtually is matured by the age of 8. So we need to make sure that the learning process is suitably adopted, that maximal advantage of this kind of a pattern by 85% by the age of 8 is whether it is language learning, whether it is literacy and numeracy. These are all critical elements in this phase of the foundational phase of the school education. This you carry forward a little more from unstructured, you go into the curricular structure in the next 3 years, that is from age 8 to age 11, where the curricular structure and standardization can be slowly introduced. And carrying this forward for the next 3 years, you virtually go into subject areas. You have a teacher children student interaction much more effectively, and also have the capacity for abstraction, because that is something which was in the earlier two phases much less because of the nature of the brain growth. And lastly, we have the secondary education, the last 4 years of school education, ages 14 to 18. There will be multidisciplinary orientation with exit options. This is the phase that will prepare the student for undergraduate program. And that's why I'm coming to this, because undergraduate program is very much related to the kind of orientation in the policy that we have tried to create in the secondary level of the school education, including early introduction of liberal arts education. So this is the kind of a thing. Of course, you have vocational education here, you have the exit option here. If you want to leave at the age of 18, the school education and take up some kind of a job, there are enough provisions for that, enough training and other kinds of things. In fact, we have recommended that we need to have a youngster who knows at least one vocational area thoroughly, 100%, in by the time he leaves the school, that kind of a thing. And the first 4 elements of the vocational education in the overall scheme is a part of the secondary and part of the middle as well as the secondary education. So this is the broad thing. I thought I wanted to emphasize this mainly because these are the times in we understand today the neural sciences and the kind of cognitive science which dictated this study of creating a policy around the present understanding of the brain and its growth. And I thought I should bring it to the attention of this erudite audience. And this is just to give you an idea of a brain, how critical it is to make sure that we make use of the brain and its stimulation, the early phase of the child's growth. And one can see very clearly the cognitive stimulation, what it does to the brain, to a case where such a simulation has not occurred. We can very clearly see the temporal lobes, how different they are in terms of its growth and maturity, and which essentially means how much you take advantage of the pattern of the brain growth in terms of the learning process and also the teaching process. Now, having said all this with respect to the school education, we move over to the undergraduate education, part of the higher education. What the policy does is to promote a holistic. We have made a broad approach which is holistic and multidisciplinary at the undergraduate level. And this is something which is not new to this audience, and especially I don't know IIT Delhi's some of the very early efforts in the context of holistic and multidisciplinary education. They generate more imagination and creativity in the student to ensure their all-rounded development. And of course, the concept which we today term as a liberal education, which is really multidisciplinary and holistic, is an age-old idea in the Indian context. I don't have to say this again. The Banabhatta's Kadambari, which is considered a person was recognized as truly educated when he mastered the 64 kalas encompassing music, dance, painting, culture, languages, and in addition to subjects such as science, engineering, and mathematics, as well as vocational subjects. Liberal education explores the remarkable relationships that exist among the sciences and humanities, mathematics and arts, medicine and physics, etc., and more generally,
the surprising unity of all fields of human endeavor. A comprehensive liberal education develops all capacities of human beings: intellectual, aesthetics, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. So, this is the approach, and this is the one we have tried to translate into the policy as a crucial step to lead India into the 21st century. The fourth industrial revolution, multidisciplinary education is central. Even engineering schools, I know IITs following this, in this case, will move towards more holistic multidisciplinary education with more arts and humanities, while arts and humanities students will have to learn to aim more science, while all will try to make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills. India's rich legacy, I mentioned about Bhanabhatta's work and many other kind of work subsequently in the arts as well as in sciences and beyond, will significantly help in making the move towards such an education, hopefully an easy and natural transition. Now, how is it that the policy has put that in concrete terms? Liberal education with broad multidisciplinary explanation, it has to be an imaginative and flexible curricular structure, creative combinations of disciplines of study. This has been chosen, whether it's arts, crafts, sciences, mathematics. One has to see how do you create a creative combination. This has to be all worked out. And multiple exit and entry option is another important feature of the undergraduate education. And master's and doctoral education will provide a sub-based specialization as a part of the higher education. The 3 to 4 year undergraduate course with multiple exit options, the 4 year program is the main recommendation in terms of the undergraduate program. Undergraduate degree will encompass, of course, liberal arts, multidisciplinary and holistic education. And then you have the chosen major and minor concept that is there. We have the vocational subjects, and later on, even professional education will be brought into this kind of an undergraduate education, which is a 4 year. The 3 year program, which is currently very much there, will be retained with the necessary changes to bring in more holisticity and interdisciplinarity. Both the 3 and 4 year programs lead to a degree with honors with research work. So that is another thing that one. So there is a provision for research work in the undergraduate program, which prepare on one side it really enriches the youngster, on the other side we certainly have a better preparation for the higher education, and ultimately exit provision does exist with a 2 year diploma in the with a 2 year diploma at the end of 2 years of undergraduate, and a 1 year certificate at the end of the first year of the undergraduate education. These are all drawn in a way in which there is enough provision for the person when he exits, he will have an appropriate kind of a professional career which can be chosen. And this is a preparation that you try to do in the first year and second year of the undergraduate education, with the proviso that in case in the later years you want to come back to the education with certain provisions with respect to the preparatory part of the entry, you can still continue your education to a third year or a fourth year or even higher education part of the postgraduate education. This is also kept as a flexibility in the system. On the master's side, 2 years for those with the 3 year undergraduate degree, 1 year for those with the 4 year undergraduate degree with honors, and an integrated 5 year program is the three kind of flexible way in which you can go towards master education. Next one I would like to bring is the integrating professional education. Regarding the integration of professional education with general education, the policy aims to take a holistic view to the preparation of professionals by ensuring broad-based competencies and understanding of the social human context, a strong ethical compass in and addition to the highest quality professional capacities. There is something holistic about the recommendation that we have made. I'm sure most of the professionals are very aware of this particular part of it, especially the IIT faculty and the academics. And but we have made a strong pitch for this because we think many of the higher education institutions, especially the university system, certainly need to address this much more seriously than what has been done so far. All institutions offering either professional or general education must be organically evolved into a multidisciplinary institution offering both by 2030.
The overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, including professional and vocational education. Thus, this approach will be applicable to all higher education institutions across the current streams, which will eventually merge into one coherent ecosystem of higher education. This is ultimately the objective by 2030, 2035. There is certainly a time frame. It's not easy to make this kind of transformation, but we think that we need an integrated professional education as a part of an overall higher education. Now we come to the quality higher academic research in the fields. Again, I don't have to carry coal to Newcastle by giving you why we should do research, but put some numbers here just to see that the situation in our country with respect to research. Whereas IITs and those ICERs and things like that, you have tremendous research and vibrant activity going along with teaching. The broader question of the university systems, both state and the central, I think we need to do quite a lot. Even though we do address this question of a quality academic research in the overall context of higher education institution, we would like to particularly make this policy focused on educational systems in the university, and many of the state universities and other private and some of the other private universities certainly has to review this in the context of the type of recommendation we made. And we do know the importance of the European Union estimate that two-thirds of the economic growth of Europe during they came the research. You had also, if you really look at the European accomplishments in the research and innovation, I was just trying to look at some of the details. 15% of all productivity gains in 2013, and that an annual increase of 0.2% of GDP in R&D investment result in an annual increase of 1.1% in GDP, a five-fold return for the type of outcome that they were getting. If you look at the present research and innovation investment in our case, 0.7, we can keep debating on that. One has to compare it with respect to something like 2.8 in US or for 4.3 in Israel or South Korea. These are the kind of just 3 times the proportion of GDP. And this lower level of investment certainly meant the number of researchers in India per lakh of population is just 15. Numbers are 400, 800 kind of numbers. If you talk of US as an example, other it has an impact. I don't have to again emphasize low levels of patent application and scientific publication. So these are the kind of thing, and certainly it was a very important agenda in the another discussion with regard to propagating research in the higher educational institutions. And so we have spent a considerable space and time to make sure that we have some very tangible recommendations on promoting this. Now, how have we tried to recommend it? We have tried to recommend the creation of a national research foundation. It is it is based on the fact that the policy will put emphasis on catalyzing and energizing research and innovation across the country in all academic disciplines, with particular focus on the state universities and colleges. I said that in the beginning, and that is where really the lacuna does exist, and they are serious there too. A fund to seed research in all universities and colleges so that synergies between the research and quality education can be leveraged maximally. NRF will fund across all disciplines, it's not only in engineering, and also it will expand the research and innovation at all universities and colleges, including private institutions. We have not made a distinction between private institutions and public funded institutions. And the criterion will be, of course, the merit of the proposal and the kind of capability to do research and the type of outcomes. And we need to make sure that they get the benefit of a funding system where this can be pushed further. After all, they also educate Indians, and many of the people depend on the private institutions for education. The NRF will have the provision to cover many themes: science, technology, social sciences, arts, humanities, and many more. In the scope, of course, everybody understands funding research through a competitive peer review process, building research capacity at academic institutions across the country through mentorship. There are very specific recommendations we have made regarding the mentorship, the type of bringing in
people who are veterans of research, who are at this time available for guiding research in these kind of institutions, who can spend some time doing research, guiding research, and also establishing the capability to conduct research in these kind of institutions, and then create the beneficial linkages between researchers, academy, everybody talks about this, and disseminating research through seminars, which is the other aspect of doing research. So these are the kind of things. This is just to give a little brief summary, a snapshot of the kind of thought that we have put into the National Research Foundation. We think this needs to be established, and this is also going to be. We had, of course, in our mind things like the National Research Foundation of USA. There are models of establishing this kind of a system, which really becomes a place where they address the excellence, the relevance, and the kind of outcomes with respect to research. And this has had a very strong influence on the support of research in the educational systems in many of the advanced countries, and particularly if you look at the models like US and Europe. And the other aspect that we have addressed is question of energized and educational capable faculty. We have spent devoted considerable space with regard to the questions of the faculty, the quality and engagement of its faculty. And virtually, we can say the faculty is put back at the heart of the higher education. The rampant practice of contractual appointment, one issue, very heavy teaching loads, these are all may not be applicable to institutions like IITs. But these are anyway, I don't have to emphasize these aspects of it with respect to the broader issue of higher education. The infrastructure support, most faculty do not even have a structural faculty recruitment and development plan. So we have gone into the details areas like recruitment, development plan, career proposal, progression, compensation management. Every part of the institutional development plan should carry this in the higher education. Appropriately designed a permanent employment tenure track system for the thing by 2030. Autonomous faculty empowered to make curricular choices, conduct assessment of students, infrastructure for continuous professional development. These are other aspects of it. And appropriately designed bridge courses for mid-career professionals to get into teaching. That's also available so that if anybody wants to get into the teaching profession from another area where you need to facilitate this by the appropriate bridge courses that can be worked out. One of the important things that we have tried to do is to consider the school education and the teachers for the school education. One thing we found that the existing system, the school education, doesn't meet the type of standards and the type of things that we need to have as a background for teaching at the school level by the conventional educational system providing teacher education. What we have tried to do is to move the school education preparation will be done in the multidisciplinary universities. Departments of education will be set up in many universities to offer a 4-year integrated state-specific BEd. The whole idea is to bring in BEd as one more of those undergraduate educational stream, one of the undergraduate educational stream, put it at a par with the other professional educational themes as well as the mainstream education. So BEd will be an undergraduate program of study covering both disciplinary and pedagogic teacher preparation courses for each stage of education, foundational to secondary. All subjects, including arts, sports, vocational education, they will be mainstream. On par with other undergraduate degrees, gradually the 4-year program will be eligible for master's and PhD programs. And the current 2-year BEd program will continue till 2030, but that after 2030, only those institutions who are capable or who are qualified to provide a 4-year teacher education can offer the 2-year teacher education. So we want to make sure that the standard, the quality, and the excellence that is intrinsic to defining the teacher education and preparation certainly it takes into account through the higher education systems overseeing the teacher preparation and education. 2-year program will be used for lateral entry of school teachers. There are also many interests in the people becoming school teachers in the lateral mode. Specifically designed courses in the pedagogy for mid-career professionals to become faculty will also be introduced. And I don't have to say substandard and dysfunctional teacher educational, thousands of them have been already shut down. And this is recommended to be reviewed. Either they move towards institutions like the degree giving autonomous colleges
or they close down or move over to other areas where the teacher education is not the main focus for these institutions. Something on the educational technology, Professor Ram Gopal mentioned about this with respect to the Prime Minister's this thing. We have addressed the questions of integrating technology at all levels of education. There is a very specific section where we have discussed this. I don't think I need to go much into the details of this. Again, the questions of four broad categories, well known: improving teaching, learning, imitation, and supporting teacher preparation, continuous teacher professional development, enhancing educational access to disadvantaged groups, streamlining educational planning, administration, and management, and teacher training for trade. The edutech is critical. And towards this, I also bring in some example where improving teaching, learning, and evaluation as a part of the educational system's resilience during the recent crisis like the COVID-19, the online education, synchronous mode, live interactions, and asynchronous mode, blending high quality pre-recorded content, rapid feedback with automated smart evaluation. So these are the kind of things on the improving the teaching and learning and education. Example regarding the supporting the teacher education and continuous teacher professional development, you have the recommender systems for content and certifications. Just another example in the COVID-19 scenario, the enhancing educational access to a disadvantaged group, connect the few specialized teachers to virtual classrooms of learners with specific needs, must address the digital divide. That is the biggest problem with respect to the implementation of some of the digital divide, and certainly this is to be seen. Now, streamlining education planning, administration, and management. We are also trying to set up as a part of this a national repository. There is a national repository of educational data to track progress in achieving educational goals. So this is just to give you a gist of the kind of thing that we have gone into details in the policy on the questions of educational introduction. But equally important is the fact we have tried to create a kind of a setup. It is not creating a lab, or it's not creating a facility, but it's a kind of a forum, a national educational technology forum, which we have recommended to be set up with the following rules to provide. But the reason why we thought about this kind of a body in the context of choices, in the context of selection, in the context of a research in educational technology, in the context of adaptation of educational technology from other sources of technology. The reason why I thought is the moment you throw open an technology as a facilitator for certain type of function, whether it is related to education or many other areas, it could be even to deal with energy from the waste. The type of technology and the type of options that will be available are enormous. And most of the time, the ability to make choices is one of the biggest problems that we see. The questions of when ISRO did work related to a national, what you may call as a developmental program, where you wanted to bring educational information to remote areas. The choice was to make sure that we create educational material. But what were the materials? Those materials had to be researched whether it is appropriate for the tribal population which is going to receive the material. 2 to 3 years of research work was needed before you could decide what the educational material and the technique of reaching the local population who will receive those material, and they will get enriched themselves in the process. This is a major challenge. This is one of the kind of example that if you want to proliferate the technology, you need to have a means of studying it, understand, evaluate, and regulate it. That's the idea that National Educational Technology Forum that we have tried to set up to provide an independent evidence-based advice to state and governments on adoption of technology-based interventions, to build intellectual and institutional capacities in educational technology, to envision strategic thrust in areas of technology domain and to promote education in them among educational institutions, and to articulate new directions of research and innovation, the use of technology for improving education. We would assume that these kind of things, also the actual activities on research and things, will be carried out by the Department of Education, which will come up in the higher educational institution, at least some of the higher educational institution.
So the National Educational Technology Forum will maintain a regular inflow of authentic data from multiple sources, including the educational technology innovators and practitioners, particularly at the grassroots level. Disruptive technology, I don't know, this is something you're very much day to day, you're seized with. The 1986-1992 policy could not expect the internet's disruption. This policy fully expects the educational system to face many technological disruptions, artificial intelligence, machine learning, and so on. Two major aspects related to such disruptive technology we have identified: harnessing technology to improve educational outcome, that is human plus artificial intelligence, hybrid interactive systems, education in new and disruptive technologies, identifying them and preparing students in new large numbers. And finally, the project addresses both these kind of a thing, the policy. Now, on the governance side, I've just tried to, again, we got the policy in the beginning of my talk. I'm just coming back to the policy side and what is the kind of a governance structure that has been done. I am trying to here show the state education and the central education in two color codings. The blue is the color code for higher education and the yellow is the color code for this. And the main thing is the central agency for the education, the CABE, which is currently there, a council of the educational the thing. This particular CABE, the Central Advisory Board of Education, is now in this policy, they have elevated to the level that they will oversee the overall administration, governance, and evaluation of how the policy is going to work at from the central level, and also to make fine tuning or midterm corrections if needed, and virtually becomes a kind of a kind of a reviewer and evaluator, and also a recommender with respect to the changes needed in the context of the higher education. So this is the system which is adopting the Central Advisory Board and making it more empowered. Then we have an Higher Educational Commission of India, which is what is recommended to be set it up as the highest body on the higher educational commissions. As a part of the governance, you have the four major verticals that are there under the HCCI. One is academic and standard setting, which can be the PS, the professional standard setting bodies, and so on. That GEC, General Education Council, the National Council of Technical Education, the All India Council of Technical, the medical. Ultimately, they will all come under the PS, the professional standard setting bodies, under the academic and standard setting. And on the academic side, you have, of course, the National Higher Energy Qualification Framework for higher education. And then you have the second one, which is regulation, the National Higher Educational Regulatory Body. And then you have accreditation, National Accreditation, this is the council. Then you have the funding, Higher Educational Grants Council. So these are the four verticals under a Higher Educational Commission of India. This is what is recommended. And of course, the education provision will continue to be given by the autonomous institutions and other types of institutions which are a part of the higher education or school education. So this is the kind of a structure, broad structure, that we have tried to evolve with respect to the governance of the educational system and with this clear delineation of the higher education part of it. Important about this is the fact that empowered governance and autonomy of higher education. This is something which I don't think that this need to be much discussed when a place like IIT or IAC, but it's good to know that this is one of the things that had been of concern while they were debating on the subject with several of the experts in this area. The recognizes the effective governance and leadership is the key to creation of a culture of excellence in the innovation of higher educational institutions. All the higher educational institutions in the next 15 years will become autonomous, self-governing entities through a system of graded accreditation or graded autonomy. With appropriate greater accreditation, such institutions shall establish a board of governors consisting of highly qualified and competent individuals with proven capabilities and a strong sense of commitment, something which we need to do for many of the higher education institutions in this country.
The Board of Governors will be empowered to govern the institution free of any external interference, something everybody talks about it. This is something very explicitly made clear in the policy. Make all appointments, including that of the head of the institution, and take all decisions regarding the governance. The Board of Governors will be responsible and accountable to the stakeholders through transparent self-disclosures of the relevant thing. The Board of Governors to develop a strategic institutional development. These are all there in many of the institutions, long term, medium term, 5 years, or short term, 1 to 3 years, based on the institution can develop educational and research outcome, parameters for quality and capacity, improve organizational and financial and human resource development plan to assess the progress. So this is just to give you a flavor of what we have recommended in the empowered governance and autonomy of the higher education. So the most important aspect is the fact that we have strongly recommended the autonomy on the governance, on the academics, as also on the finances. Now, what is the kind of way forward before I conclude the thing? There are several things I did mention in the beginning of my talk that there has been one of the most important steps that was taken immediately after the government took decision on accepting this recommendation with necessary inputs from public domain and other sources is the fact that once they knew that there were a number of presentations, there were a number of discussions, there were a number of seminars and other kinds of interactive systems. And both Honorable Prime Minister and Honorable President were involved in many of these. I don't have to say that here. Many of you were there as a part of that particular thing. So there is quite a lot that has happened in terms of sensitizing the policy in its role, but certainly there are many things which continue to be inquired about, seek clarification about, and not every some of them will come forward only when you try to do these things. You start getting a feel of the issues, and that is where I said about the midterm correction or fine tuning or better clarification or change of strategy. This will be a part and parcel of this, but by and large, I find that this is understood by many of the policymakers and implementation the related responsible people. The MOE itself has done an action plan. Now they have done it. I understand. They have, because I'm telling this this part of it more from the input that I received rather than trying to be a part of it. But I want to say that the MOE has certainly provided a good action plan, which they have worked it out, which has got something like 100 and they have taken the higher education policy section. They have looked at the various policies items. They have converted them into identified action plans, and 181 activities have been identified with the time frame that it needs to do this under 16 broad themes. This is what they have tried to do. We need to do this. There's a continuous churning of these ideas, and some discussions are going on this. The UGC on its own has been also organizing conclaves for discussions on this particular thing. And then there have been a lot of the outreach of the policy to different segments of the governance systems of the country, both the central and the state, has been another major feature of the recent efforts in trying to make sure that the policy is read, understood, and then come out with suitable strategies of implementation which are applicable, because there are the local issues also. One has to keep it in mind. There is a broad strategy that we need to have for the country, for the policy to be translated into the next step of implementation, and also specifics with respect to the local conditions or the regional conditions and things of that kind, which is more than just the policy. It has got finances, it has got the resources, human resource, and many other things. So this is something on which work will be done. But the fact I would like to emphasize is, and you know this again because you are a part of a system which is implementing it, that this work is in the forward, in the movement. And I cannot but conclude with the statement that, as I said in the beginning, I think this is a very unique policy. It has its own challenges to implement. But I think what is important and what is reassuring for some of us is the fact that
many elements of this has been done in some form or other by institutions. And I mentioned about the IIT Delhi because of its pioneering role in areas like multidisciplinarity and approach of science, technology, and policy, society, or more recently, with respect to humanity and social sciences to be integrated into the undergraduate education. So these are things on which it is not that these are all totally new because of the policy, but there is much more that has been done through the various actions and directions and visions of various leaders and institutions of this country. I'm sure that we need to understand it very clearly. We need to see how that can be adopted and how this policy itself can aid in taking it forward. So, with these few words, I would like to thank again the Institute, the director, deputy director, and others for this privilege of talking to you and sharing my thoughts with you. Thank you very much. My name is K. Ramachandran. Currently, I work at Senior Advisor, Unit for International Cooperation, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. The topic I have today is importance of policy in education and the fundamental principles guiding the National Education Policy 2020. Let me take the first part. What is the importance of a policy in the field of education? A policy normally gives a direction for education development in the country, say, for the next 10 years, next 20 years, and so on. Policy sets a vision. For instance, the National Policy on Education 2020 envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India into an equitable, vibrant knowledge society by providing quality education to all, thereby making India a knowledge superpower. That is the overall vision. So a policy provides a vision based on which we can formulate programmatic interventions to fulfill the vision, at the same time also to meet the education sector development programs in the country.
The National Education Policy 2020 has certain fundamental principles guiding it. Number one, for instance, the policy seeks to recognize, identify, and foster the unique capabilities of each student so that we can nurture and foster her or his holistic development. The term holistic development is very important. I'll come back to that later. The second term, which is very important for all of us, is the term flexibility. The NEP 2020 envisages flexibility in paths of learning, in choice of programs and courses, so that the education can be tuned to the interest and talent of each student. So this is the second principle guiding the policy. The third principle is what we call honoring student diversity. India is a country of tremendous diversity in terms of socio-economic status, in terms of culture, in terms of language, and so on. And therefore, the kind of students we get also would be of tremendous diversity. Many of them could be at the undergraduate, postgraduate level, first generation learners. How do we honor this diversity? Let me get back to the term holistic development. What do we mean by this term, holistic education? It simply means an education program that would help develop all capacities of human beings. For example, intellectual development or intellectual capacities, physical capacities, social development, emotional development, aesthetic development, ethical practices, and moral development, all in an integrative form. To have this integrated approach, therefore, will require exposure of students to or building capacities across variety of disciplines like arts, humanities, social sciences, natural sciences, vocational education, performing and visual arts, and so on. That would be what we call a multidisciplinary education approach. So to promote holistic development in the higher education sector, two quick actions. Number one, moving higher education institutions into large multidisciplinary institutions. And the word large is also important. In India, we have a large number of standalone institutions with the enrollment in many cases less than 1,000 and even less than 500. How do we move these single stream higher education institutions to a multidisciplinary institution? That becomes a transformative initiative, number one, for us. Second, can we offer in our universities and colleges multidisciplinary programs? That means a person may major in physics, maybe the person may offer a minor or opt for a minor in music or a visual art or history or economics. That means there is no clear-cut demarcation between
arts, sciences, vocational field, and so on. That means the boundary between different areas of knowledge can be removed and get an integrated holistic education. Students are given options to choose courses or programs of study according to their interests and talents. And that is possible only we offer what we call multidisciplinary education. Gradually, all undergraduate programs in the country will move towards a multidisciplinary education approach, including those related to professional education, vocational education, and so on. So therefore, many of these professional, technical, and vocational education programs also will have this approach, what we call a multidisciplinary approach to education. So this is a transformative initiative we envisage through the implementation of the National Education Policy 2020. Third, the National Education Policy 2020 envisages what we call institutional restructuring and consolidation. What do we mean by this? All higher education institutions in the country would be categorized into 3 groups. Number 1, those which are referred to research intensive university. They will offer high quality research programs in addition to high quality teaching. That means the focus will be on both high quality research and teaching. This will be one set of higher education institutions. Second, teaching intensive universities. They will focus more on high quality teaching, but at the same time, they will also do significant research. This is a second category. The third category belongs to what is referred to as autonomous colleges or constituent colleges, which can award undergraduate degrees, but they will also, if they accept 4-year undergraduate program, will also have research projects done by the students. These are the 3 categories of institutions we propose to have during the next 10 years. Research intensive universities, teaching intensive universities, autonomous colleges, or constituent colleges, which will award undergraduate degrees. Gradually through this, the affiliating system followed by the current universities will go away. It means many of them would become, the colleges affiliated now, would become what is referred to as autonomous colleges or constituent colleges, which would be an integral part of the university. So this is what we call institutional restructuring and consolidation. The fourth aspect, if you really want to improve the quality of education, make it multidisciplinary approach to education, we will need to attempt revamping of curriculum, including pedagogy and assessment program. Therefore, we will need to undertake curricular revision. Learning content should be revised. Pedagogical approaches should be
made in tune with the revised curricular structure, and assessment that would help in moving towards, in terms of the multidisciplinary approach. This is what we call moving towards academic excellence. Now, academic excellence, as I indicated earlier, include three things. Number one, enhancing the relevance of learning contents. This is one aspect. The syllabi has to be revised, and the contents related to these must be improved. Second element of academic excellence is what is referred to as teaching excellence. How can we ensure that the teaching learning process is improved to make it excellent in terms of imparting relevant knowledge, skills, attitudes, and values among all our students? Third element of academic excellence is, as I indicated earlier, improving the assessment methodologies and procedures. The policy talks about three approaches to assessment. Number one, assessment of learning. That means assessment of learning outcomes, expected learning outcomes. Sometimes we call summative assessment. This is one aspect that helps students to move towards certification and so on, improve learning process, and see how we can move forward. The second element is what we call assessment for learning. Teachers assess learning to improve their own teaching methodologies, instructional strategies, pace, styles, and so on. This is essentially what is referred to as formative assessment. In fact, the emphasis now will be more and more on formative assessment. The next element is what we call assessment as learning. After assessment, students have what we call self-assessment strategy. Can they make self-corrections? Can they do self-monitoring of expected learning outcomes and make corrections required to enhance learning? That means the students themselves will use assessment to improve learning processes. That is assessment as learning. All these are part of what we call academic excellence. The next element of policy is faculty as the main part of learning process. Faculty at the heart of learning process. It means faculty excellence is something we aim at. This would need high quality induction programs for university and college faculty, high quality refresher program for the existing 1.5 million faculty in universities and colleges, for their continuous professional learning and development. And through that, we can bring about faculty excellence for three core functions. Number one, what we call teaching excellence, scholarship, and so on, including next one, excellence in research, teaching, and scholarship.
So one important aspect of policy, therefore, is can we enhance the quality of research being done by Indian universities through the creation of the National Research Foundation, which will fund peer-reviewed research proposals and programs proposed to be undertaken by universities, mainly universities and faculty of universities and students. So therefore, the next transformative initiative relates to enhancing quality of research or catalyzing quality research and innovations. This is again a transformative initiative. The next transformative initiative we are talking about is, again, in the context of academic excellence, is utilizing technology. That means leveraging technological and digital technologies in education for 3-4 purposes. Number one, enhancing access to quality education. Number one is this. Second, improving the quality of teaching and learning process in universities and colleges and other higher education institutions. Third, can we leverage technology for continuous professional learning and development of our faculty in universities and colleges? Fourth, can we use technology to improve educational planning and administration at all levels of education, including higher education management system? Next transformative initiative in this context is changing the regulatory system of higher education. We now have a single body regulating the higher education system. Can we ensure that the higher education system have a body for regulatory functions, a separate body, maybe named as Higher Education Regulatory Authority? Second, a body for standard setting in higher education, a separate body for standard setting, referred to as General Education Council. The third body, as we have now, for assessment and accreditation of higher education institutions. What is being done by NAC? Can NAC be a meta-accreditation body, which may have many more bodies to accredit, and NAC plays the role of a meta-accreditation coordination body? Last, a body for financing higher education. All together, all these four, that is regulatory body, standard setting body, accreditation body, financing body, under an umbrella organization called the Higher Education Commission of India. This is considered to be another transformative initiative. What the policy proposed is, while regulating higher education, we want a system that is simple but tight, that not too many indicators, take a few indicators to accredit a body, regulate a body, but enforce it tightly. So that's the kind of thing we are talking, that
this system will help develop quality education institutions. And in this context, technology is an important aspect as well. The next element in the context is policy is based on what you call equity and inclusion in all higher education institutions and so on. So equity and inclusion, I consider inclusion as providing access to success, not just access to facilities, and ensuring retention. Can we ensure that all enrolled students in the country will have access to success? They would attain the expected learning outcomes in the case of all students. So equity and inclusion as cornerstone of the National Education Policy 2020. Next in the case is, can we ensure what is called the support system for all colleges and universities, a quality learning environment to ensure a conducive learning environment for, a support system for students, how we can do it. So an important emphasis of the policy is on what is referred to this as improving the quality of learning environment and support systems, including the healthcare systems for students and faculty. Can we attempt that? Last but not least, I talked about this. When we say continuous professional development of faculty, I normally mention 5-6 areas of action. Number one, that training is important, as we do through this program. But in addition to that, can we have faculty exposed to good lectures by experts in the field on variety of disciplinary areas and so on. Number two, can we have demonstration lessons, demonstration teaching for all faculty members, subject related, subject specific, and so on. Third, we may have virtual or in-person subject specific groups which can meet virtually or in person once a month to discuss issues related to subject areas and so on. Next, can we provide opportunities to faculty to have action research on pedagogy, curricular contents, learning assessment, and so on? Can we aim at that? Next, can we ensure opportunities for faculty to participate in state level, university level, national level seminars, conferences, and so on? That also contributes to faculty learning and development. And lastly, even international exposure to faculty, participating short-term programs abroad, customized to program on research and development, and can we do it? And that is one element. Since I have limited time, I'm not trying to say that the policy, when implemented totally, will help enhance student excellence, students capable of demonstrating the graduate attributes expected, the learning outcomes defined
for all stages of education. Number one, this. Contribute to achieving academic excellence through improvement of learning contents, teaching, assessment practices. 3, achieving teaching excellence through the kind of programs we talked about. 4, achieving excellence in research and scholarship. 5, achieving staff excellence. Non-academic staff in university, can we achieve that? Next, can we give opportunities to international experience for our students and faculty? Faculty exchange program, student exchange program, and so on. Next, very important, as policy indicates, achieving excellence or quality in university leadership, college leadership, and management. You may ask me a question, what is the difference between leadership and management? A leader is one who sets a vision for your college or university, sets directions for actions during the next 10 years and so on, 15 years, 20 years. And through this, can we aim at reaching a gross enrollment ratio in higher education for the age group 18 to 23 years, 50% by 2030. That is a target. Can we reach that? So excellence in governance and leadership is extremely important thing. Management. A manager controls resources, deploys team to ensure that the proposed vision of a university is enhanced, achieved, and that becomes the role of a manager. To end my discussion, I would say, what is proposed is to implement these transformative initiatives during the next 10 years to ensure high quality higher education, to make India a global knowledge superpower during the next few years, to reach the overall vision of the National Education Policy 2020. And in this, faculty of colleges and universities have a pivotal role. And that is why policy says teachers and faculty at the heart of the learning process. So I end by saying, next few years, we invest more in faculty, more in continuous professional learning and development of faculty in each of our higher education institutions to move towards a multidisciplinary higher education institution, to implement a multidisciplinary program, to improve leadership at all levels, to enhance governance management, and these are all part and parcel of the NEP 2020. I stop at this stage. Thank you very much for your kind attention.